आप वीडियो से yeah. Shall I switch off my video? Yes, ma'am. वीडियो किधर है? सही है, मेरा वीडियो किधर है? मैं चली गई। Okay. Friends, welcome to the this edition of Smart Session. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इस स्मार्ट सेशन में हम आज एक one of the topmost and most successful चीफ एजेंसी पार्टनर्स ऑफ एपीसी को के साथ में आपको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, एंड शी विल बी टॉकिंग अबाउट हर जर्नी with agency partner channel and how did she rise to the zenith of success as she has reached today. So today we have this very special guest, and I'm sure all of us will gain immensely from this session. Before we get into this session, I just I would like to welcome all of us back from the Diwali holidays. I hope Diwali went off well, peaceful, and आप सब ने अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताया। तो अब दिवाली के बाद में अब यहाँ से, if you all know now the there are not too many holidays between now and the end of financial year. So 4.5 months of very high season, very high business, very high growth, in terms of opportunity, ये हमारे सामने है। और उसी सीजन के लिए मैं अब आप लोगों को तैयार करना चाहता हूँ। तो जैसा कि हमारी ट्रेडिशन रहा है, we will start today's session and we will start with the champion of the month for October, and उसके बाद में we will move to the guest for the day. So friends, champion of the month for the October is a recognition platform which is which is an exclusive platform as a part of the Legends of India program for our partners, and it is a monthly and quarterly version of the recognition. हर monthly और हर quarter में हम करते हैं, और यहाँ हम अपने partners के contribution का celebration करते हैं monthly, quarterly और annually. तो देखते हैं कि month of October कौन-कौन से हमारे champions हैं। सबसे पहले let me start by congratulating the senior agency partner and the chief agency partner for the month of November. As we are all aware, our recruitment is still catching up in the post-pandemic phase, but our SAP and CAP promotions have gathered a lot of pace, and we are very proud and happy to share with you the SAP and CAP promotions for the month of November. Okay, let's join our hands and start and congratulate the bona fide SAP promotion for the month of November. A big round of applause for Srinivasan, Usha, Prerna Singh, Prem Singh, and Bishwajit Chaudhary from Madurai, Lucknow, Hisar, and Kakurgachi in Kolkata for getting promoted to a bona fide SAP in the month of November 2020. Congratulations! I think it's a great achievement. To Srinivasan, Usha, Prerna Singh, Prem Singh, and Bishwajit Chaudhary, well done. I think you have done a fantastic job, and please, keep this journey up to become a chief agency partner very soon. Similarly, we have a big number of internal senior agency partners who have been promoted. APC में हम जब भी बात करते हैं, हम career की बात करते हैं, because there are a lot of other companies, insurance companies where we can do this business, but no company talks about career. And Kotak Life is the only insurance company which talks about how you can grow in career with the organization. And we are proud and privileged to announce the promotion of our agency partners into internal senior agency partners. Here are the internal senior agency partners of APC जिनकी promotion नवंबर में हुई है। ठीक है, गौरांग सेठी जी from Cuttack, निवेदिता छोटराय from AC Market, अरिजीत कुलावी from श्रीरामपुर, Ramesh D from Perambur, Subramanyam from Tanjavur, Selvaraj Muthuswamy from Tirunelveli,
Santosh Hans from Residency Road, and Suresh Chalal from Hubli. Big round of applause for all of you for taking the next step in your career and becoming a senior agency partner with us. May you keep on rising from peak to peak, and we would be looking forward to your success in the times ahead. Friends, moving on now to the pinnacle of the APC career. We are very, very privileged to announce the name of a bona fide chief agency partner who has been promoted in the month of November 2020 from Metro Tower in Kolkata, Amit Karmakar. Big round of applause and many, many congratulations to Amit Karmakar for getting promoted to a chief agency partner bona fide in the month of November. As we all know, our chief agency partners are the pinnacle of success. उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं कि उनकी सफलता को लेकर हम कई सारी कितनी मिसालें देते हैं और वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं. तो अमित कर्माकर जी, बहुत बहुत बधाई हो for becoming a bona fide chief agency partner. Keep on growing and keep on rising from here and start building a very, very big team. Similarly, it's my privilege to announce that we have our internal chief agency partner promoted from Ahmedabad branch, Yogita Singh. Big round of applause for Yogita Singh for becoming an internal chief agency partner in Ahmedabad. I think, promotions to senior agency partner and chief agency partner are an example of how passionate people have been able to overcome all the challenges, and it is a big, big moment for all of us. Friends, moving on, we also had a big 84 internal agency partners who were coded in the month of September. Okay, and this is a very, very large number. Our internal agency partner coding अब पिछले साल इस समय के बराबर लेवल पर पहुंच गई है. तो आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा to all the internal agency partners for this promotion, and a big round of applause. Okay, Mr. A.R. Srinivasan is here. He has just come to Mumbai, first visit to Mumbai. ARS, welcome. We are doing the smart session. Okay, Hema ma'am will be speaking today. Okay, so we are just announcing to the promotion. Hema ma'am, if you can just unmute your, start your video for a minute. ARS is here. Hema ma'am, if you are there, yes. Up mute pe ho ma'am. Yeah, Good morning, sir. When we introduce you, I felt we have to do it from your hometown. That's why I've come here. So nice of you, sir. You made my day. One thing I have to say, nobody can match you and Vivek in talking, sir. I bow down. No, I'm near your house, no, Andheri. And I know, my Mecca. The city and maybe the street. Birthplace, everything. Yeah. It's a privilege to introduce Hema madam. She doesn't require an introduction because she requires an introduction to insurance industry. She has achieved MDRT for 7 times, and she has created many MDRTs, and she is a founder member of APC. But all these had happened. She is one of the top performer. She has built around 100 plus partners in her L1 and L2. And all these has come up with a lot of struggle, and she fought her way through. In fact, I recollect the first association of Hema madam in when I met her first time in Raheja Towers. That was a different Hema madam, and today she is very, very senior and a very knowledgeable leader in APC, and she is able to guide a lot of people, and her success has come through with a lot of struggles, and she had to take a lot of chances. She had to take a lot of risks to come up to this level. And I don't want to steal anything. I don't want to tell anything, but I want Hema madam to give a good impression about her and how she started her career, how she became 5 times MDRT with a erstwhile employer, and how did she start building team in Bangalore, and how she was able to contribute to the APC build-up. Today, Bangalore is one of the highest productive city for APC, and she is the founder member of that. And madam, over to you. Congratulations and hats off to your
contribution to the industry and to the business in APC, and to all of us personally. Thank you. So we'll Thank you just, so much. ma'am, we'll quickly come back to you. Yeah. Thank you, Alice. Thank you. Thank you. Okay, ma'am, you can go on. Yeah, thank you so much, ma'am. Yeah. Friends, after this wonderful introduction by Mr. Srinivasan, okay, we are coming back to the IAP promotions. We will quickly move through our promotions. We can have a big round of applause for all the internal agency partners who have been promoted in the month of October. Congratulations to all of them. I would quickly read the names. Sarvani Ghoshal, Ramesh Chandra Mahapatra, Renu Kanti Jaina, Saraful Khan, Kutish Chandra Biswas, Anand Kumar, Sambit Bhattacharya, Avirup Mukherjee, Runa Laila, Diganta Talukdar, Rijuma Pegu, Rahana Begum, Raktim Ranjan Bhuiya, Korsima Barua, Satyabrat Barua, Biva Sindhu Roy, Roop Jyoti Kalita. Congratulations to all of you. Rajesh Kumar Srivastav, Shabnam Firdosh, Bimal Kantinath, Gurpreet Bhinder, Inderjeet Manocha, Tara Chandra Yadav, Milap Singh, Anuj Saklani, Rajendra Kumawat, Monica Rani, Alok Lahiri, Bharat Swami, Premnath Tiwari, Paramjit Singh Nanda. Congratulations to all of you for reaching this position. Mr. Alageshan, Mr. Paludurai K, Senthil Nathan P, Vasu V, Mahalakshmi K, Govindarajan N, Ashokan V, Mayur Nathan V, Mallika TSK, Sarvani I, Bhanumati R, Sagadevan Panikar Swami, Jayabrati R, Prithviraj R, Narayan Raju K, Nageshwar Rao. Congratulations to all of you. I think the list is big and we are really proud of this. Ramesh K, Dattatreya Savant, Suma Palankar, Ramchandra Babu, Suresh GS, Prachita Yalameli, N. Nityanand Kothari, Krishna Udapudi, okay, Vanaja KG, Vijayan Muktananda Shetty, Nagaratna N, Sudha Pula, Rasika Nayak, Karuna Mahajan, Silverio Rodriguez, Kalavati S, Nazima Graces, Joyland D'Souza, Shakuntala N, Vivekanand R, Gopal Krishna G, Jaidev A. Congratulations. I think the list is so big and we are privileged to have so many internal agency partners promoted. Bhupat Sonigara, Nazira Sharma, Ram Kirat Jaiswal, Sudha Paladkar, Sandra Rodriguez, Mangal Kharkar, Vivek Bhatt, Maria Vaz, Kulkarni Gauri Jagdish, Ruchita Wani, Sanjeev Agarwal, Dimple Patel, and Savitri Vishwanathan. Heartiest congratulations and best wishes to all of you for taking your next step in the career. Okay, Rahul, from next time we will also add AAP to AP promotion in this list. Rahul, please take a note of it. Friends, now moving to the performance for the month of October. Here are the partners who have done the highest business in the month of October in Pan India. The number one topper in India, and please remember this is just for the month of October, Miss A. Sudha from Adyar with 49 lakhs of converted businesses, a national topper, and big round of applause to Miss Sudha for such an outstanding performance. Followed by again Mr. Easter from Adyar with 41 lakhs of premium. Wow! Both number one and number two coming from Adyar. What a performance! Big hats off to both of you and congratulations to the Adyar branch. Okay, coming from Faridabad in North is the All India number 3, Mrs. Ricky Chaudhary with 24 lakhs. So congratulations to the national toppers. You have made us proud here. Now on coming to the zonal topper, the topper from South 1 is from Coimbatore, Mr. Karthikeyan V. And if you look at the titles,
all the individual performers at the top are actually, DPOs, ISAP, ISCAP, and everyone. So Mr. Karthikeyan, he is the topper from Coimbatore for South 1. From Mangalore, Mr. Vivian Sequeira, leads the charge for South 2. Mr. Piyush Kanti Bej from Kakurgachi is the topper for East. Miss VSH Devi Mandapati from Vishakhapatnam is the topper for South 3. Durgeshwar Barua from Sib Sagar is the topper for Northeast. Neel Kamal Sharma ji from Andheri is the topper for West. And Sonia ji from North is the topper from Connaught Place branch in New Delhi. So big round of applause to all the zonal toppers. You make us very, very proud. Let's keep up the great work. Moving to licensing, the national toppers is Shyamal Kumar Jena from AC Market, who has coded. I think there is a reverse order. So Easter from Adyar with 13 licensing is the national topper. Congratulations to Easter for being a topper in the business and topper in the recruitment as well. Followed by Prabhavati from Jayanagar, who is in South 2 is topped at second position, and the third topper is Shyamal Kumar Jena from AC Market. Big round of applause to all three of them. You have licensed tremendously well, even during all the challenges which you have faced. And this is a magnificent performance. Let's keep up the great work. Coming to zonal toppers from East, there are two people, Rajiv Paul and Ajay Minch. From North, we have Nima Singh. From Agartala in Northeast, we have Shubhrato Sarkar. From South 1, Mailapur, we have Rajalakshmi K. And also Venkatesh Shivakumar at a tight position. And from South 2, we have Kashinath VK. And from South 3, we have V. Krishna Nalluri. And West, Gulnaz Tariq. Big round of applause to all of you for such a wonderful performance. We are really proud of the way you have performed. Big round of applause to all the zonal toppers here. Okay, moving on to the absolute CLA. Friends, we all know that we are very passionate about partners activating their entire team. And here are the national toppers on absolute CLA. Vivian Sequeira from Mangalore with 12 CLA is the national topper, holding this as a joint position with Sonia ji from Connaught Place in Delhi. Okay, big round of applause for Vivian Sequeira and Sonia ji for such an outstanding performance. We are very proud of the way you are doing it. Durgeshwar Barua, Doraishwami M from Shimoga, and you can see ISAP, ICAP, main DPOs, they're all leading it from the front. Okay, Doreshwar M from Shimoga is the third position and is tied with Sukanti Ravi Kumar from Porur, both with 11 CLA on login. So congratulations to Vivian Sequeira, congratulations to Sonia ji, Doreshwara M, and Sukanti Ravi Kumar for such a wonderful performance. You are making all of us proud. Coming to the zonal toppers, here are the zonal toppers from East, from Rourkela. We have Tapash Nayak. From Hisar for North, we have Jatin. Northeast, this is a tied position, 3 people, Pankaja Barman, Durgeshwar Barua, and Thandi Devi. All of you, tied at 10 CLA. From South 1, we have Suresh N. From South 2, we have 2 of us, Parimala N and Girija Amma BV, tied at this position. From South 3, again, we have a tie with K. Ramaya and, Kandula Rao, tied at 6 CLA. And from West, we have Gulnaz Tariq with 9 CLA. Here is a big round of applause for absolute, zonal toppers on absolute CLA on login basis. Coming to a very interesting thing, who are the ones who are making pension income? Friends, it's my privilege to announce that, Mr. M.H. Nasir Muhammad, our founding, CAP and one of the founder members of APC, has and his indirect business for 1 month, just for the month of October,
is 82.68 lakhs, which is a mind-boggling performance. So many congratulations to Nasir sir for such a wonderful performance, followed by K. Tyagarajan from T. Nagar with 77 lakhs of premium, followed by P. Jayakumar from Adyar with 72 lakhs of premium. What a wonderful performance, clean sweep by the Chennai team, and a big round of applause for all our national toppers. You make us all very, very proud. You know, coming to the zonal toppers, we have from South 1, Mr. Balu with 61 lakhs of L1 and L2 business. Tops South 1, Mr. Madhusudan sir tops South 2 with 59 lakhs. Sangeeta Chandakji from Faridabad tops North. Prabir Majumdar from Guwahati tops Northeast. Banashika Roy from AC Market tops East. Nirmala Devi ji from Vishakhapatnam tops South 3, and Dharmendra Kumar from Vashi tops West. Big round of applause. Very, very proud of your achievement. I think this is something which makes all of us really proud. Coming to highest partner coding, you know, Sandeep Patra, congratulations to Mr. Sandeep Patra from Kakurgachi for being a national topper in partner coding. He also is a DPO owner. So he's coded 6 partners in the month of August, followed by Yogesh Rajput from Goa, who has coded 3 partners, and Akshay Kumar Datta from Balasore, who has coded 3 partners. Well done. Congratulations to all of you for such a wonderful performance. And here are the zonal toppers. And we have a big list here. From East, we have Satish Chandradas, Devashish Mohanty, and Suman Bhattacharya. Well done to all of you. Keep coding many more such partners in your team. From North, we have Shazia Sabir and Ajay Singh. From South 1, we have Rukmani V, C.R. Jayashankar, Malini B, and Suguna R, who have all coded 2 partners each. From South 2, we have Rekha, Sagar M, and Srinath K, who have coded 2 partners. From South 3, we have K. Saroja, who has coded 2 partners, and Borivali, we have Jyoti Sawant. So, well done. Whatever people have to do in a long period, you all are able to do in a month. That is great leadership. Hats off to your leadership. Heartiest congratulations to all the champions for the month of October. I think you all have made us very, very proud with your outstanding performance. Friends, this is the spirit of APC. Come what may, this is the way we perform, and this is the way the whole, the success bandwagon keeps on moving. As we move ahead, I would also like to share with you 2 very good news on products. One, all products like Assured Saving Plan, Assured Income Accelerator, Guaranteed Saving Plan, Bachat Bima, and Life Booster Combo are now available for sale. Okay, so they will be available with 100% credit in all contests and all other benefits where it was stopped earlier. And we can now continue to sell it in very big numbers, because now we are very, very clear in terms of the way pandemic is shaping out. And God willing, I think we are coming out of it as a country in a very strong and healthy manner. Okay, so all these products are available for sale. In addition to this, the new product which we have launched called Health Shield has got a very good response. So, it is selling in very large number. There were some initial login challenges which were there, which have all been addressed, and we can go out in the market and sell this product in a very, very large manner. Okay, so, so we are now very happy to talk about Health Shield being available, Assured Saving Plan, Assured Income Accelerator, Bachat Bima, Guaranteed Saving Plan, and Life Booster Combo. A total of 6 new options are available for all of us. We are all aware of a very exciting, contest on CLA which has been launched for all our partners. I would like to just quickly reiterate it for everybody's benefit. Okay, because during Diwali we launched a very super contest. It's called the Super Diwali Dhamaka contest for CLA getting active between 13th and 27th of November. All our partners will get a reward of 1,500 rupees for 1 CLA. If you get 2 CLAs active, you get 5,000 rupees. And if you get
3 CLAs or more active, there is a straight away reward of 10,000 rupees. Okay. So friends, this is a big opportunity for all of us. And I would like all of us to take full advantage of this. Okay. Coming to the last point, December is the month of MDRT. And this is the first time that the MDRT criteria has been reduced. Okay, the MDRT criteria today is as it was almost 15 years ago. And we are seeing a very large number of MDRTs getting created. This is a great time to go and think of creating MDRTs in your team, because there are great prizes for MDRTs, great awards for people who are creating MDRTs. If you see the scheme, for creating for becoming an MDRT with 25 lakhs, there is a car for the advisor or the IMD. There is a bike for the partner. And, you know, similarly, if you keep on creating more and more, I think there are wonderful prizes. So let's not miss any one of them. Okay. So on that note, you know, thank you so much. And now I would like to introduce the guest for the day. Okay, today we have a special person, and you know, my memories with Hema ma'am, Miss Hema Jayaram from Bangalore is here. You heard, Mr. Srinivasan talk about her. You know, we all have very, very high respect and fond association with Hema ma'am. You know, and yesterday night, evening, we were talking about it. Long before APC moved into reality, and it was just a design on the whiteboard in a Kotak Life office. You know, Hema ma'am, I had the privilege of having Hema ma'am in my office, and we are discussing with a lot of passion about what we wanted to do. None of us, we all had hope and confidence. None of us actually knew where we will be heading. So ma'am, you know, before I hand it over to the team to talk about you, you know, first of all, thank you for trusting us when we just had a paper to say, okay, it is. Thank you for joining, Bangalore Residency Road when it was an office to be opened. You know, thank you for being a pillar of support to APC, like which is unparalleled. And I'm sure this entire team which is here will benefit immensely from your experience, your learning, and your knowledge. So welcome to the session, ma'am. Thank you so much. And now Thank you so much, sir. Our head of training, Biren Sen, to take it over from here. Biren. Yes, Vivek. Narayana Pillai and Philip Joshua, good morning to both of you gentlemen. Yeah, and Biren, good morning, sir, and good morning, Hema ma'am. Good morning, sir. Good morning, Hema ma'am. Very good morning. We have the leadership from South to Philip and Narayana to take this forward. And I'm sure they will not only do a reintroduction, they will share with us a lot of interesting things about you, which will really inspire all of us. Over to you, Narayana. Yeah. Good morning. It is indeed a great pleasure, ma'am, to talk about you. And if we are not talking about you in this forum and even in a bigger forum, honestly speaking, we're not doing justice for the introduction itself. So I instead of introduction and other thing, I am just recollecting some of the memories as Vivek sir was telling that the day when you joined in Residency Road, and I think I would rather call you as a CAP, as a chief agency partner, rather than a celebrity agency partner. I would call you in that way, because for the entire country should know that a classmate of our Madhuri Dixit, and when you told all those things and other things, I was actually okay, fine. It has happened to be a classmate of Madhuri Dixit, that is fine. Then the point is that when you took me to recruit the South Indian film superstar Mammootty, and we collected the premium and the first MDRT created for the APC of Karnataka and all these things, when we did that through his son-in-law. So that is also a great moment. So when we started very small as an APC, as Vivek sir said, on the papers only we were able to tell you and all these things. And it has got some people only have got a visionary thought process and other thing. People used to tell that people invest in startup companies and other things. So you have trusted us, trusted the model, and
being a veteran in this model, you trusted this and given 100% towards that. And all those memories are still coming into my mind, and I'll not be able to tell all those things immediately. But at the same time, even today, or any kind of a support, Philip will be telling much in terms of that. Whether it is political, I should not tell that economical, but medical, these things, whatever you call it, like an encyclopedia. You ask Madam will be there in terms of supporting the APC champions and APC. Great to see, and always you should smile like this and perform wonders in your entire life. My best wishes, and this is my humble introduction to you, ma'am. And over to Philip. Philip will have many more things to talk about. Thank you so much. Good luck, Thanks for ma'am. your kind Good words. luck, madam. Thank you so much. Thanks for your kind words. Over to you, Philip. Thank you, Vivek sir and Pillai sir for the introduction. And good morning, Hema madam, and good morning to the Good morning. entire agency partner channel team members who have logged into this call. When we began APC in Karnataka in 2012, Bangalore being the first branch that was launched, I still have fond memories. Even before I joined Kotak and took over the branch responsibility here, we knew that Hema madam would be a great asset, and she will definitely join in this journey of being a great agency. And the first meeting that we had was in Costa Coffee at Korumangala, if I remember right, in 2012. And from there, every day has been a day where there's been a lot of learning, and the growth of this channel also has seen Madam grow from an individual contributor as an MDRT, who has been a 7-time MDRT in our previous organization, to one of the best CAPs in the country today. Okay, when I say best CAP, she has she has been qualifying for the last 3-4 years consistently as a chief agency partner to CEO Circle. So that transition is what is really striking, that comes to my mind, from an individual contributor to a person who started believing that a team can be developed. And in fact, before the GCC concept was introduced, she became the first partner to achieve 1 crore in her direct team. And a lot of firsts to her name. First MDRT for Karnataka was contributed by Madam. Though she joined as a direct chief agency partner, first person to become a bona fide chief agency partner by achieving the norms that are required by developing to senior agency partners. First one to do direct team of 1 crore, and that from that point in time onwards till today, her contribution has been immense. And one striking fact about Madam, if I have to really talk about, is that she believes in learning daily. Okay, it is not that it's a success which has come overnight. Okay, the transition might have been difficult, which she might be able to share it much better, because as an individual you don't carry responsibility as an individual contributor, but when you start working with a team, you have to shed a lot of things, you have to gain a lot of things, and so on. And that has been the real striking factor in Madam's journey. And over this last 8 years, if we have to talk about role models in this channel, our channel is a channel where a lot of role models are there, and I consider Hema Madam as to be one of the role models who have been instrumental in building this channel, and also instrumental in maintaining the growth that we have seen. And that is about Hema Madam. And last 8 years of association, I can proudly tell that she is one of the ladies in this vertical who has built a team from scratch, and still continues to build. As Pillai sir rightly introduced, okay, it is more than business. Now she's an integral part of Kotak, be it anything that anyone requires. Okay, she's there to support, and that is one character where she goes out of the way to help people, and that is also one of the reasons why she's successful. I would like to also now introduce Taki, who will be taking this forward along with Hema Madam, this particular session. Taki, who's the head of South for training, will be along with Hema Madam take this session forward. That is it from my side, and all the best to you, Hema Madam, and over to Taki and Hema Madam. Thank you so much for your kind words. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. So welcome, Hema ji, and it's a privilege to be. I always
I am the person who shares the same office with you. And today we are in this webinar, and it's an honor to be hosting this webinar and to helping others understand what Hemaji is, what has been the journey for Hemaji. So my pleasure. Thank you so much, my pleasure. Hemaji. Thank you so much. It's a great it's a great achievement for me to be sharing the screen with you and taking it forward. So this session is a session where we are going to know Hema Jayaram as not only as an individual but also as a CAP. So Hemaji, little bit about your journey before we begin. Okay, so how has your initial journey been in the life insurance industry? Before I talk about my initial journey in the life industry, people need to know what I was. Any which ways, welcome Kotak family, all the APs across the country, all the partners. Happy Diwali to you all. And this is a new journey, the Gujarati's New Year. So we are starting a new year, and trust me, it's going to be with a bang. There was no crackers this time, so we are going to fire the crackers in Kotak agency, and we'll do it. So welcome all of you all. And about my introduction or what I was before I got into insurance, I got into insurance because I had no other option. I can say by chance, no option, accident, whatever you say. I was a housewife for 17.5 years, born and brought up in Bombay, had a love marriage and got migrated to a small town near Mysore. Not even near Mysore, Mysore say 60 kilometers away, a small hamlet, I can say, known as Chamrajnagar, with hardly a population of 20,000 people. So sitting, coming from a city of Bombay where you talk in crores, I didn't even have a lakh or even not even half a lakh of people. So that's where I spent close to 17.5 years of my life after marriage. When I came to Bangalore, it was a personal crisis. I had a very sick child. My son was very unwell. So the doctors advised me that I have to move to Bangalore. Anything and everything that happened in my life was not out of my choice. It just happened and I had to fight it out. So the struggle was not easy. So when I wanted to do something, one of my cousins came and told me, why don't you come and join an insurance company? वहाँ पर तुमको training लेना and then you can sell the products from home. So it was very comfortable. Training ले लो, घर में बैठो, make a phone call, sell the product. So that was my understanding. And the best part was when I went to go, those days, since insurance was new, you had to attend an interview. So when I went to my former company, which is Tata AIG, I was rejected 4 times. 4 times by the company to become a normal agent, not even something beyond that. 5th time, my cousin said, you know English, you're very good in your language, you have completed your education, let me see who will not take you. तो हिंदी में एक कहावत होती है ना, खेल में किसी को लेना है तो कच्चा पापड़ पक्का पापड़, चलो उसको ले लो लेकिन not counted. और 12th man of the cricket, इसकी कभी चांस ही नहीं आती क्रिकेट खेलने के लिए. So I was a 12th woman of the batch because there was a shortfall of agent. That is how I started my career. Initial journey was very tough because Bangalore was new to me. I had just shifted to Bangalore in 2000 and I joined the insurance industry in 2001. I didn't know a soul. I didn't know a soul who was here. So initial journey, definitely very tough, started from scratch. One thing I would say is my focus or my intention of joining any company was very clear. There was a huge financial crisis and I had to make money. So that thought was, so my goal was very clear. I can say my destination or my journey towards my goal was very clear. मुझे पैसा बनाना है. घर की हालत ठीक नहीं है, बच्चा बीमार है, तो I have to make money. So that was the only drive at that point in 2001 which I had, I can say. हेमा मैम, शुभाशीष सर, अगर आप हिंदी में भी बता दें थोड़ा क्विकली रिकैप करके, तो हमारे जो मित्र हैं नॉर्थ के, उन्हें भी थोड़ा सहायता हो जाएगी. हाँ जी, माय नेम इज हेमा जयराम. मैं बॉम्बे की लड़की हूँ, लेकिन शादी होके मैं मैसूर के पास एक छोटे से कस्बे में रह रही थी. 17.5 साल के शादी के बाद मैं बैंगलोर शिफ्ट हुई क्योंकि मेरा बेटा थोड़ा बीमार था और डॉक्टर का कहना था कि हमको एक सिटी में रहना बहुत जरूरी है. पैसे की बहुत जरूरत थी, काम करना बहुत जरूरी था. तो मेरी एक कजिन ने कहा कि तुम एक इंश्योरेंस कंपनी में लाइसेंस ले लो, घर में से तुम फोन करना, तुमको बिजनेस आ जाएगा, प्रोडक्ट जैसा हम सेल करते हैं, और तुमको पैसा भी आ जाएगा. सुन के बहुत अच्छा लगा, बात तो कर लेते हैं, तो फोन उठाएंगे, बात करेंगे, पैसा आ जाएगा करके.
I went to that company. जब मैं उस कंपनी में गई इंटरव्यू के लिए, उस जमाने में क्योंकि इंश्योरेंस बहुत नई थी, जस्ट इंट्रोड्यूस हुई थी, जब मैं गई थी टाटा आईजी में, मुझे 4 बार रिजेक्ट किया. उसके कारण बहुत अलग अलग है, बोलने जाएंगे तो एक दिन निकल जाएगा. 4 बार रिजेक्ट हुई. 5वें बार जैसे हम लोग कहते हैं ना कोई खेल में, उसको उसका दिल रखने के लिए ले लो. तो लेकिन एक चीज थी, जब मैं क्या कहते हैं, जो मेरी इच्छा थी या जो मेरी चाहत थी या मेरी जरूरत थी कि मुझे पैसा बनाना है, घर चलाना है, कि कोई मतलब नहीं है, तो वो इच्छा मेरी बहुत स्ट्रांग थी. अगर वो फोकस हम में रहे कि हम क्यों बाहर आए, हम घर छोड़ के क्यों बाहर आए, तो हमको कोई हिला नहीं सकता. दैट इज फॉर श्योर. Thank you, Hema ji. Thank you, Hema ji. Indeed, it was a very interesting insight. मेरा टेक अवे ये था कि बड़ी सिंप्लिसिटी से आपने अपनी जर्नी को डिस्क्राइब किया कि किस तरह से एक हाउसवाइफ सोचती है and how insurance industry can bring a lot of brightness, and you are a shining example for all the housewives and part-time businessmen who are with us, जिनको अपनी जिंदगी में कुछ पाना. Thank you so much, Hema ji. It was indeed interesting. मेरा आपसे अगला सवाल होगा, Hema ji. This is my next question. Share us what are the initial challenges and learnings in insurance business. शुरुआत के दिनों में किस तरह की संकटें, किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा और आपने क्या सीखा उनसे, हेमा जी? Initial challenges were I didn't know anybody in Bangalore, and I didn't have much relatives, no friends, no anybody. So when I joined, there was a girl by the name Shazia there. उसको पटा के रखी थी, मेरे को विजिटिंग कार्ड ज्यादा प्रिंट करके देना, क्योंकि उस जमाने में you couldn't print your own cards. Bangalore, luckily, being the IT center, विप्रो में ऐसा था कि लंच के टाइम पे to collect references and perspective list. This was my mantra for the first 15 to 20 days of the month, because without a prospect list, where are you going to do business? ITPL thoda standard, it was much better than Electronic City. You had a wonderful garden, you had a nice food court and all. So there, giving among the 6 terminals was much easier. But this is how I collected my references. Where I clicked, I can say, is in my erstwhile company, we had something known as a work marketing, where we used to sell the small accident policies for 250, 300 rupees. So I had a manager by the name Milind. And Mr. Milind is a Maharashtrian, a bit short-tempered. He only picked up people who were good in communication, because we were going to a corporate. And he said, you can speak well, 10 calls लेना है आज, 2,500 नहीं होगा आपसे. मैं 250 बार छलांग मारी, मैं कहाँ से लेकर 10 लोगों को. He said, go there, talk on the floor. And it was a huge auditorium. I went inside the auditorium, I stood, I saw the people, I had cold feet, जिसमें 2-3 औरतें या लड़कियां were wearing this right side nose pin. People in the north and south, especially the women, know that right side nose pin is always adorned by the South Indian woman and left side by the North Indian. दिल को बड़ा सुकून मिला, चलो अपने बिरादरी वाले कोई है. I went and stood to them and said, please don't tell my boss that I have not presented insurance to you all. Tell him I spoke about insurance to you all, because he is going to question me. They said, but what are we going to reply if he'll ask us? Say we'll think and do it. That is the only answer. From there, I took one reference from one of the ladies. She gave me a husband's reference. And from there, my journey started. Her husband was working in a company known as Texas Instrument. And he was around about 33 years of age. And he said, she said, go and meet my husband, because he's looking for a policy to cover his loan. I was very happy. क्योंकि कहाँ 250 रुपया and where वहाँ कुछ नहीं तो भी 10,000 आएगा, 30% 3,000. ये पैसा से तो वो पैसा अच्छा है. It was a big kick. I go to meet Mr. Ramanujam. If I can go in detail, I can say the first day when I met him, he sat with me and he gave me his requirements. And he said, you get the policies, get me the working of all the policies. I said, okay, and I went back home.
did all the policy workings. That was my first meeting. Second meeting, I go to him, he sees all the policy. And Ramanujam was a big, I can say, eye-opener, a tutor for me who literally handheld for me to understand what a client needs so that my rest of the journey becomes easy. And he said that, give me the details, give me the compounded bonus factor and all, get a bond, means a company se pooch ke batao ki what they have written about the compounding bonus is a true or not true, because I need to know the details. The second sitting, I come back home and I tell my company that guy is asking if we are doing compounding interest and is it assured. So the company said if revisionary bonus is assured, compounded bonus is assured, we can always write and give. Operations was very kind enough, we go and give. Third sitting, I finished that. Fourth sitting, a gentleman says, I need a bond from Tata AG to see what all is written in the bond. Because of my financial conditions, I didn't have a policy of my own. So to go and ask somebody else to give me your bond was a very tough thing. Luckily, I had one more colleague by the name Mr. Yusuf. Can't forget these people. He said, Hema ji, aap chinta mat karo, aap mera bond lekar jao, aap unko dikha do. Unko tasalli ho jayegi. So my fourth visit, I go, I meet Mr. Ramanujam, I give him the bond. He sees that. Then after 3-4 days, he calls me and he tells me, Madam, I think I need to do a comparison. So I would like to have a bond from ICICI. And trust me, to go to his place from where I stay or my office was to where he was, by auto it was $52, and by bus means it was 2 buses and a walk of 1.5 kilometers. It was very, very, more than 1.5 kilometers. The campus itself was a huge one. So I would curse him and go every time. मैं बोलती थी इसको इतना, I don't know what to do to this guy, मेरे को इतना सता रहा है. I have not seen a guy worse than him. पर इच्छा था क्योंकि 30,000 की प्रीमियम बात हो गई थी. वहां पर भी एक दिल में एक ख्वाहिश थी कि 9,000 आ जाएगा. उस जमाने में TDS भी नहीं था. 9,000 के लिए मेहनत करना ही पड़ेगा. Fifth sitting, I go, I give him ICICI bond. I come back, I finish all that. He calls me for the 7th sitting saying, Ki, I want a bonus letter which is declared by your company. Otherwise, I can't take it. In fact, when in the second sitting, the third sitting was happening, he called me on a Sunday. He called me on a Sunday where he told me that my father-in-law has come from Chennai. I want my father-in-law also to understand the product. You please come. So Sunday को जाने के लिए मेरे में हिम्मत नहीं थी. The reason was मेरे को insurance join करके it was not even 3 or 4 months, and I didn't know how to handle a guy of his caliber. So I called up my manager, and my manager said, I've gone to my hometown, Hema, I'm in Mysore. He said, take the other manager. The other manager, I called him up. He said, yeah, you please come 5 o'clock. You come to my house, pick me up, we'll go together. 5 o'clock, I go to my manager Subhash's house. His mother tells me, he's not there. He's gone out with his jijaji. He's somewhere on MG Road. You won't believe, I took my husband and my son. We go to MG Road, trying to search him because there was no mobile. But his mother told me about a pub's name in Brigade Road where he will be sitting having beer with his jija. I sent my son to call him out of that pub. From there, we pulled him to the client. So this kind of struggle is not something everybody faces. But coming to the last point, in the 8th sitting, he calls me and he says, tell your company to share a bonus letter which they have given to one of the clients. Again, one of the trainee managers had it by the name Sangeeta Koel. She shared her letter. जाके इसको दे दिया. 8वां sitting में बंदा मेरे को बुलाया और बोला कि yeah, Hema, I'll do the policy. We'll do everything. I've decided I'm zeroing upon you. Yours is a case. I finished the signing, forms, everything done. He's looking at me, I'm looking at him. I said, kya hua? I said, where is the check? He said, oh, check. I forgot to bring the check. I'll come and give it to you tomorrow. My 9th sitting was the time I got the check from him. After I got the check, दिल पे ठान लिया था, इसके बाद रामानुजम का चेहरा नहीं देखेंगे. 33,000 का प्रीमियम आ गया, बहुत हो गया, इसका और मेरा रिश्ता यहीं पे खत्म. I finished that. I come back. After 4 months, I get a call from Ramanujam when he tells me that, Hema, I want a pension policy. Why don't you come and sign? 10,000 के pension policy में टाटा AG आपको 2% की commission देती थी. मैंने ठान लिया, फुक्कट में भी मैं नहीं जाके करूंगी इसका काम. It doesn't make any sense. But when he insisted that I come, I realized that day when I went to Texas Instrument, he had sent a circular mail to middle management and above saying,
if you need perseverance and patience from an advisor, it is Hema Jairam. She is somebody who can show you immense patience. She learns with you. She gets back to you with all the prompt action. And thanks to Ramanujam, I can say from that day till I was an individual seller, my 60% of MDRT contribution came from Texas Instrument. So this is not Wonderful. a journey. Yeah, Taki. वंडरफुल हेमा जी, इंडीड आपकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपके लर्निंग्स आपने कुछ बहुत सिंपली आपने कहा कि प्रोस्पेक्टिंग आज के डेट में एनीबडी हु वांट्स टू बी सक्सेसफुल, अ पिकअप फ्रॉम द हेमा जी हरसेल्फ इज दैट प्रोस्पेक्टिंग इज इंपॉर्टेंट. सो वो रोज का प्रोस्पेक्ट का खोजना एंड यू नो ensuring that the calls are there, sticking persistently with difficult customers. So actually what you're speaking is the key to success, and thank you so much for sharing these insights. Hema ji, my next question to you is that in spite of these challenges, in spite of these customers, what has motivated you to aim for MDRT? इतना बड़ा लक्ष्य, इतने challenges एक साथ, एक हाथ पर challenges, दूसरे हाथ में आपका बड़ा लक्ष्य, क्या है? What motivated you? मैं सच कहूं तो MDRT क्या मैं नहीं जानती थी जी. अगर सच को 3-4 साल में ऐसे ही भागी क्योंकि पैसा था. रीजन क्या था? टाटा AIG's convention was always more than the MDRT. तो by default होने लगता था. So only in the 5th year I came to know what was the MDRT, that it's a global recognition. It is equal to what is Oscars to the movie industry or what is Grammys to the music industry. That is the time I understood what it is. Then somewhere that I won't say ego, एक चाह होने लगती है कि चलो international नाम पे भी एक बार आ जाए कि we have achieved something. Because it was in the 5th year that I registered myself for the MDRT. So that was something, it was a very, very prestigious thing because the card will have the logo of MDRT. Yes, that is the time I felt ki yes, now we have to do something. And trust me, all movies come across in India. We all are a big Bollywood or Tollywood or a Collywood fan. लेकिन जब वो Stardust Award होती है ना, Filmfare Award होती है, we are very keen to see किसको award मिलती है. So that way I was also very keen to boost my own ego because I had to pat myself on the back. That MDRT was my vision because it's only 2% of the world population that achieves MDRT. So that was something. It's a very nice feeling. वो एक बार वो अवार्ड लो, उसकी अपनी मजा होती है. वो मैं यही कह सकती हूँ कि जब तक आप जाके भुगतोगे नहीं, आप जाके इसको महसूस नहीं करोगे, बोलने में मजा नहीं आता. ये जायका जैसा होता है, आपको पर्सनली एक्सपीरियंस करना पड़ता है. दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. वंडरफुल. जब तक आप चखेंगे नहीं तब तक आपको इसका स्वाद नहीं मिलेगा. सो नहीं वो शादी के लड्डू जैसी है, खाओ तो भी पछताओ, ना खाओ तो भी पछताओ. आई एम श्योर आप खाने के बाद पछता नहीं रही, आप एंजॉय कर रही हैं, रिपीटेड सक्सेस मिल रहा है. 100%. श्योर. बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हेमा जी कि अगर बिलीफ हो, इफ यू आर सर्टेन ऑन योर बिलीफ, देन इट्स वेरी वेरी यू नो एमिनेंट दैट वन अचीव्स एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल. क्या आपको लगता है कि राइट नाउ देयर आर मेनी प्रोफाइल्स लिसनिंग टू अस which is beginning from a housewife to retired individual to business? Can this formula be applied to everybody? Hema ji, aapki kya rai hai? What do you think about it? Insurance is a very common formula. It's got a very common formula. You need to have prospect list. पहली बात है कि challenges के तौर पे मैं कहती हूँ, we are not ready to take a no. अगर मैं किसी के पास गई और उसने कहा कि नहीं मुझे पॉलिसी नहीं चाहिए, अच्छा उसने मुझे ना कहा, how can he say no to me? We cannot take insurance personally. And please, all my partners around across the country who are listening today, I would like to say that insurance is not a product that we are selling. Product is something जहां पर feel found factor आ जाती है. एक अगर खाना होगा तो आप चख सकते हो, कपड़े आप पहन सकते हो, गाड़ी आप चला सकते हो. अपार्टमेंट वाले इतने बड़े हो गए कि वो लोग अपना अपार्टमेंट बना के आपको दिखाते हैं कि अपार्टमेंट बनने के बाद ऐसा होता है, बिला भरने के बाद ऐसा होता है. लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जहां पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ जानते हो, आपकी जन्म कब हुई है आप जानते हो, आपको पता है कि मौत निश्चित, इट इज कंपल्सरी होने ही वाली है, लेकिन वो डेट, वो तारीख आप नहीं जानते हो. तो इंश्योरेंस क्या होती है? जो
निश्चय हो गया है, जो मौत निश्चय होगी वो कब होने वाली है वो पता नहीं है, उसको कवर करने वाली होती है। और इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट नहीं होती है, इट्स अ सर्विस, इट्स अ फ्यूचरिस्टिक सर्विस जहां पर क्लाइंट के मैच्योरिटी पे आप उनको साथ देंगे या क्लेम पे उनकी फैमिली को सपोर्ट करोगे। दिस इज द ओनली बिजनेस जहां पर पूरा जर्नी तक आप क्लाइंट के साथ रिश्ता बना सकते हो, और कोई चीज नहीं है बाजार में, कोई बिजनेस नहीं है जिसमें आप कह सकते हो कि मैं 10 साल रिश्ता रखा इस क्लाइंट के साथ या 15 साल रखा, क्योंकि जब तक आप वो पॉलिसी के रिश्ते के साथ रेन्यूअल के टाइम पे हर तौर पे आप उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे, वो आपकी परिवार हो जाती है, वो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली हो जाती है। तो इंश्योरेंस को चीज मत मानो, कोई भी चीज पर्सनल मत लो। बिगेस्ट चैलेंज वो है कि हम अगर किसी ने अपने को 2 बार ना कह दिया, हम बोलते हैं मैं क्यों जाऊं उसके पैर पड़ने, मैं भीख मांगने नहीं जाने वाली, मैं भीख नहीं मांग रही, मेरे घर में खाना है। इट इज नॉट कि तुम्हारे घर में खाना है, तुम्हारे घर में खाना नहीं है, इट इज कि हम कितने सोसाइटी को सुधरने वाले हैं। पहली थिंग, डोंट टेक इट पर्सनल, अपने पे मत लो जब कोई आपको ना बोले। हम दुकान में जाते हर चीज दिखाते, हम थोड़ी खरीद लेते हैं। दुकान वाला अगर बोलने लगा कि मैं नहीं दिखाऊंगा, मेरे को सेल्स की नौकरी नहीं करनी है, नहीं हो पाएगा ना। हम अपने मैनेजर्स को, जब वो लोग कहते हैं कि ये साल ये महीना कितना बिजनेस हो सकता है, हम बोलते हैं हाँ हो जाएगा 10 लाख, नहीं हुआ तो अरे क्लाइंट नहीं दिया, झाड़ के वापस आते हैं ना। द सेम थिंग इज एप्लीकेबल, डोंट टेक इट पर्सनल। That's it in this industry. Wonderful, Hema ji. The message which you are giving, हमारे जो भी दोस्त, हमारे भाई बहन, हमारे पार्टनर्स जो सुन रहे हैं, great takeaway that you have to take the self control and decide your destiny, and it's all in your hand. Hema ji, the next question is very very interesting, and this is the reason why many people fail. Okay, कि जो रोड ब्लॉक्स आते हैं MDRT की जर्नी में, उसमें क्या कॉमन मिस्टेक्स है? व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स which people who aspire, क्योंकि सपने सर हर कोई देखता है, but उसको पूरा कुछ लोग कर पाते हैं। What are the common mistakes which people make during their journey to MDRT? Hema ji. There are, I was sharing it with Subhashish the other day. PPF सब लोग जानते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हमारे इंश्योरेंस का PPF अलग होता है, पेशेंस, परसिवरेंस एंड फोर्टिट्यूड। Wow. It is mandatory. ये PPF के बगैर हमारी बिजनेस नहीं चलेगी। परसिवरेंस को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, ताकि आई विल नीड योर सपोर्ट। फोर्टिट्यूड इज द फर्मनेस टू होल्ड द फोर्ट। लगन लगे रहना। हमारा इंडस्ट्री ऐसा है कि लगे रहो मुन्ना भाई, समझ लो ना, लगे रहो। जब तक आप लगे नहीं रहेंगे काम नहीं होगा। दैट परसिवरेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये परसिवरेंस, पेशेंस और फोर्टिट्यूड मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है। मेरे एक क्लाइंट थे जो उस जमाने में, ही रिटायर्ड एज CEO फॉर टेक महिंद्रा, मिस्टर संजय कालरा। उनको मैंने कोल्ड कॉल में पकड़ा था, 9 महीने उनके पीछे भागे। उनका रेफरेंस कहीं से मिल गया था, 9 महीने उनके सेक्रेटरी को उनके नंबर ढूंढने इतनी कोशिश की, उनके ऑफिस में जाके इतने विजिटिंग कार्ड्स, इतने ब्रोशर्स, इतने इलस्ट्रेशन छोड़ के आए। 9 महीने के बाद जब वो फोन उठाए, बोले हु द हेल गेव यू माई नंबर। मैंने उनको एक ही बात कहा, सर 9 महीने घूमने से एक बच्चा पैदा हो जाता है। 9 महीने के बाद अगर आप मीटिंग में देखोगे तो इट इज नॉट फेयर ऑन योर पार्ट। तो उन्होंने जब मुझे पॉलिसी दी, 2004 में सबसे बड़ा पॉलिसी था, 7.5 लाख का प्रीमियम कोई छोटी अमाउंट नहीं होती है। जब उन्होंने 1 करोड़ का पॉलिसी दिया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे में 3 हुनर है हेमा, कभी छोड़ना मत। दैट इज द टाइम ही सेड यू हैव PPF इन यू। मन में मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, ज्यादा व्हाट यू से कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस नहीं था। मैं बोली PPF तो अकाउंट है ही नहीं मेरे पास, ये बंदा कहाँ से बोल रहा है कि आई हैव PPF। तो ही सेड यू हैव परसिवरेंस, पेशेंस एंड फोर्टिट्यूड, नेवर लेट दिस गो। तो एवरीबडी आउटसाइड देयर, हर इंसान जो इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई भी चीज हो जिंदगी में, ना ही इंश्योरेंस, कोई भी काम करना हो, पढ़ाई हो, कोई सपना हो, उसमें ये 3 लगते हैं, परसिवरेंस, पेशेंस एंड फोर्टिट्यूड। अगर ये PPF जैसा आप उठ के रोज सोचना आज PPF मेरे को प्रैक्टिस करना है, अपने आप आ जाती है। MDRT में रोड ब्लॉक क्या हो जाती है, हम लोग को लगता है कि अगर हम 3 जने से मिले या 3 लोगों से मिले तो अभी तक पॉलिसी क्लोज क्यों नहीं हुई। आपको कितने लोग ना बोल रहे हैं वो हिसाब नहीं रखना है, आपको ये हिसाब रखना है कि कितने लोग हाँ बोल रहे हैं। That is very important in this industry. We count the number of no's, but we don't have the patience and perseverance to count the number of yes. And if you decide कि so many number of yes on an average can give me my MDRT number, you have to work on the yes and not on the no.
This year it is 30 lakhs on an average. Bangalore has got a very good ticket size of say 1.5 lakh. So technically 20 people. So if I have to get 20 yes, I have to meet 100 people to get the 80 no's. So the 80 shouldn't be a problem to you, because you have to remember PPF. The 20 is the secret or the mantra which is going to take you to the next level. In this business, it is therao, gherai, patience, patience, patience. You can roll. यही एक की है हेमा जी, जो शायद हमारे कई फ्रेंड्स मिस कर जाते हैं in their journey towards MDRT. They might miss PPF. And उसमें कारण भी है तकी जी. हम जब किसी एजेंट को ख्वाब दिखाते हैं, हम कहते हैं आप बस आ जाओ, बाकी हम देख लेंगे. हम उनको इतना रोजी पिक्चर दिखा, अरे कुछ नहीं, कौन खड़ा है बाजार में कि आओ आओ मेरे पास आओ, मैं इंश्योरेंस दूंगा, कोई खड़ा नहीं है. तो हम जब when we are giving that dreams, when we are talking about it, उनकी भी पिक्चर अलग हो जाती है. हमें भी हिम्मत चाहिए बोलने के लिए. कोई चीज जब आसानी से मिल जाती है उसकी मजा नहीं रहती है. Anything in life and without struggle nobody has achieved anything. अगर कोई कह रहा तो झूठ है. बगैर श्रम का, बगैर मेहनत का कोई चीज आज की तारीख में इट इज नॉट अवेलेबल. अगर किसी ने कहा है सो प्लीज विश्वास मत कीजिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए. मैं कह सकती हूँ कि मैं तकी पे भरोसा नहीं करूंगी, वो ट्रेनर है, लेकिन मैं अपने आप पे भरोसा कर सकती हूँ. तो प्लीज हैव दैट फेथ इन योरसेल्फ, क्योंकि अगर आपको अपने पे भरोसा नहीं है तो सामने वाले क्यों आप पे भरोसा करेगा. दैट एटीट्यूड ऑफ योर्स, प्लीज डोंट गिव अप. ब्यूटीफुल, थैंक यू हेमा जी. आई थिंक जो भी सुन रहे हैं, यू आर गेटिंग right from the achievers thought process, और इसको गांठ बांध ले PPF. ये बहुत बड़ा टेक अवे हम सबके लिए. थैंक यू हेमा जी. हेमा जी, बड़ा अच्छा सवाल. अब हम MDRT इंडिविजुअल सेलिंग से थोड़ा लीडरशिप की तरफ जाते हैं, क्योंकि आप एक निपुण, सफल एंड एस्टैब्लिश्ड पार्टनर भी हैं. एक अच्छा लीडर बनने के लिए क्या क्वालिटीज है जो एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए? व्हाट आर द क्वालिटीज व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी अ सक्सेसफुल लीडर? फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट माय नेगेटिव क्वालिटीज. जी, I was a very successful individual seller. मैं अपने आप में बहुत अच्छे से मैं सेल करती थी, तो मैं अपने आप का वो हुनर का मेरे को बड़ा गर्व था. I was very proud of my achievement. 7 बार MDRT थी कोल्ड मार्केट में, बगैर रिश्तेदार, भाई बहन, किसी से पॉलिसी लिए बगैर. I was very proud to say कि बाजार से उठाया पैसा. लेकिन जब ये पार्टनर का कॉन्सेप्ट आया ना, मुझे लगता था क्या ये एजेंट लोगों के पैर पड़ो, उनके लोगों के पैर पड़ो, पूछो, पॉलिसी लो. तो मेरे में वो समझ थी नहीं कि लीडर बनने के लिए क्या हुनर चाहिए. मेरे को अगर एक एडवाइजर ने कह दिया मैडम मेरे से आज पॉलिसी नहीं होगा, मैं अगली भाड़ में या मैं खुद जाके बाजार में बेच के आऊंगी. आई वॉज दैट वन, एक घोड़ा, सिंगल हॉर्स रनिंग. First thing is I didn't understand what is a partner and it was the toughest thing for me. मेरे को अगर कोई बोले रिक्रूट करो तो मैं पानी हो जाती थी. अगर आप मुझे टारगेट दोगे और बोलोगे कि तुमको 50 लाख लेकर आना है ये साल, मैं कहीं पे भी भाग के लेकर आऊंगी. अगर आप बोलोगे 3 एजेंट रिक्रूट करो, मैं सोचती थी ये 3 एजेंट में कहां से लेकर आऊं. दैट वाज अ बिग चैलेंज. वहां पर मुझे ये लगा कि आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट द मॉडल कैन डू फॉर मी. हैविंग अ टीम, what is the benefit of having a team for me, that I didn't understand. क्योंकि एक बार आपको समझ में आ जाएगा, then you don't need anybody to guide you. ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला जैसा है. 8वीं कक्षा में जब हम पढ़ रहे थे उस जमाने में, a plus b the whole square is a square plus 2ab plus b square. अगर ये फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ गया तो इसके जितने भी सम्स आएंगे आप कर सकते हैं. तो जब तक आप ये मॉडल को नहीं समझो, you cannot do that. तो मेरी पहली थिंग to anybody out there is first have thorough knowledge on the insurance subject, on the formation of how it came into India, what is the role of insurance in India, what are the products, what are the nitty-gritties involved in it, right from underwriting to sales to everything, because you are a one-man company when you walk out. Uday Kotak might be owning Kotak, but he or the management doesn't come out. You are the brand ambassador of the company. So when you walk out, you are Kotak walking out. So just have that pride in you कि when I am going to present myself, with what attitude I am going to present myself. अगर मैं एक शादी में जा रही हूँ तो बंद तन के जाने वाली हूँ. I am not going to go
हाफ हैजर्ड, ये प्रोग्राम के लिए हमने कितना तैयारी किया। वैसे ही जब आप एक क्लाइंट को मिलने जा रहे हो या एक पार्टनर को मिलने जा रहे हो, एक एडवोकेट को मिलने जा रहे हो, आपके पास वो हर चीज मालूमात होनी चाहिए कि व्हाट इज देयर with us. Don't go with half-baked information. Knowledge is power. That is the key mantra for any leader. Without knowledge, you cannot get into this business. Okay, so very Second thing is patience बहुत चाहिए. हम अपने 2 बच्चे पाल नहीं सकते हैं, लेकिन टीम में जब पार्टनर्स आते हैं, हाँ मैं सच कह रही हूँ, 2 बच्चा पालना. To start a team, minimum you require is 10 people. ये 10 लोग 10 परिवार से होंगे, 10 different communities, 10 different thought process, and nobody is young. जिसको एक चाटा मार के हमने सुधार दिया, nobody is young. तो you need immense patience with your advisors. क्योंकि जब advisor आपके पास आ रहा है, एक ख्वाब के साथ आ रहा है, he is coming with a dream to achieve his dream. Like how Vivek was telling, जब मैं और विवेक जी बैठे थे 3.5 घंटा एक रूम में बैठे थे, विवेक जी मेरे को समझा रहे थे कि हिमा जी ऐसा हो जाएगा. मैं बोली नो विवेक, आई डोंट हैव फेथ इन यू. I just can't believe कि इतना पैसा आएगा ये बिजनेस में. I refuse to believe. ARS was going on telling me. In fact, ARS is my first guru, because of whom I left Tata's and joined Kotak. But I still told ARS, I'm still scared. अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ? तो जब तक वो विश्वास आप में आ जाएगी, तो दैट इज द सेम कॉन्फिडेंस यू हैव टू पार्ट टू योर एडवाइजर्स. वो एक ख्वाब लेकर आ रहा है, एक सपना लेकर आ रहा है. अगर हम उनके सपने के भागीदार नहीं बनेंगे, इफ वी डोंट बिकम पार्ट ऑफ देयर ड्रीम, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू सक्सीड इन इट. और वी कैन नॉट मेजर कि तुम्हारा सपना MDRT होना चाहिए, तुम्हारा सपना यही होना चाहिए. नहीं, सबके अपने अपने सपने होते हैं. उनकी जो सपने उस हिसाब से आप उनका साथ दो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Very, very, very important. That's a very key mantra here. And another thing I would say what you require is understand what is the requirement of an advisor. कोई काम पे क्यों आ रहा है? जैसा आपको मैंने कहा, I am okay, bold enough, or I have no inhibition saying पैसे की तकलीफ थी, मैं काम पे आई. So there are some advisors who come to spend their time. उनके पास वक्त बहुत होता है, spend करने आते हैं. 90% of the people come out to make money. अगर कोई कह रहा है कि बस मैं दान करने वाला हूँ, मैं चैरिटी करने वाला हूँ, झूठ बोल रहा है. 90% of the people come out to make money. सबके अपनी ईगो होती है कि बताएंगे नहीं. Have an individual talk with your advisor to find out what is going to happen in their lives. Then you take it further. Then you start working on their dreams. That will take you to a different level. Without knowing that, you cannot do it. Well, very interesting, Hema ji. कि हर एक advisor को समझना, to understand every advisor is the key. So all the young aspirant leaders who are looking forward to make history in APC, this is the key for you, that you understand and connect to every advisor individually. And every advisor is, how do you decide which is more important and which is not so important, Hema ji? Do we do this with everybody? See, when you recruit an advisor, for the first 3 months, he or she is a NLA or whatever it is, नए आए हैं. So that first 3 months is very crucial for you to not let go that advisor. Okay. अभी मैं तो I can't tell everybody practice what I say, क्योंकि मेरे पास एक एडवाइजर है जिसको मैंने साइन किया था 2013 में. बहुत बड़ा बंदा था, लेकिन पैसे की बहुत लालच और कनेक्शंस बहुत है करके उनके पास मैं गई, फिलिप गए, नारायण पिल्ले गए, कुछ नहीं हुआ. आज करूंगा, कल करूंगा. मैं भी ढीठ बन के रह गई कि इस बंदे से कुछ ना कुछ निकालना ही है. 7 साल के बाद उस बंदे से हमने 5 लाख निकलवाया, लेकिन वो 5 लाख में जो खुशी आई वो 50 लाख में भी मुझे नहीं आई. तो हर कोई देखो, अगर कोई 7 दिन का ट्रेनिंग, अगर कोई 7 दिन का ट्रेनिंग में बैठ रहा है, यानी वो कुछ जानना चाहता है, वो कुछ सीखना चाहता है. डोंट रब हिम. उसको ये ताने मत मारना कि आपने ट्रेनिंग में बैठा, आपने क्या किया, क्या खड़ा कुछ नहीं किया. डोंट डू दैट. अंडरस्टैंड देयर माइट बी समथिंग. अगेन द PPF वर्क. अभी उल्टा हो गया है. उनका कॉल आता है, हिमा मैडम आज भी एक कॉल करना है. कभी कभी लगता है मैं इसको क्यों वापस लेकर आई, जान पे पीछे पड़ गई है. नो, every advice is coming, because if you are showing a rosy picture to an advisor or bringing him, walk the talk. आप उनका जर्नी आसान करो. तो ये बहुत जरूरी है कि पहले 3 महीना आप उनके बारे में जानो. और टू एवरी पार्टनर आउटसाइड देयर, प्लीज कंसिडर एन एडवाइजर एज एन एक्सटेंडेड फैमिली. पहले उनके घर जाओ,
उनके घर जाके देखो कि उनकी हालत क्या है। देखो अगर मैं किसी को बोलूं, मैं इतनी मेकअप करके आके बैठ गई हूँ आपके सामने, आपको लगेगा अच्छी खासी मोटी औरत है, सब कुछ है इसके पास, कंपनी ने भी कहा सब कुछ है। जब तक आप मेरे घर के अंदर नहीं झांकोगे आपको पता नहीं है कि मेरी बैकग्राउंड क्या है। हम जब घर जाते हैं किसी के 60% वी कम टू नो व्हाट इज द बैकग्राउंड, वेदर देयर इज अ नीड, वेदर देयर इज नॉट अ नीड। मोटा मोटा वी कैन अंडरस्टैंड, वी आर ऑल पीपल विद सम नॉलेज एंड वी नेवर गो अलोन, वी टेक समबडी फ्रॉम द कंपनी। ये जानना बहुत जरूरी है। एक बार उनके साथ आप घर में कनेक्ट कर दो, उनकी हर अचीवमेंट को उनके घर के सामने, उनके बीवी बच्चों के सामने सेलिब्रेट करो, तो व्हाट हैपेंस, दे बिकम पार्ट ऑफ योर जर्नी, यू आर पेविंग दैट वे। लेकिन हाँ, उनके घर जाना बहुत जरूरी है। जब तक आप नहीं जाओगे किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि हम ऑफिस में बैठ के कॉल करके बोले अच्छा आप कब आ रहे हो, आप आ जाना, मेरे को बिजनेस करना है आपके साथ, यहाँ पॉलिसी करना है। 3 महीने से आप खाली बैठे हो, आपने कुछ किया ही नहीं है। नोबडी लाइक्स इट। People who are working as salaried people have no other option but to listen, but otherwise nobody likes it. Entrepreneur has to work differently. Entrepreneur has to think differently. वो अपना बिजनेस बना रहा है तो हर दिन का everybody is important for him. Please go to their place and see to it that हर मीटिंग में आप कोई ना कोई नॉलेज उनके साथ शेयर कर रहे हो। नहीं तो क्या मजा है। आप बोले मैं हफ्ते में एक बार उसके घर जाता हूँ, उसको हर हफ्ते जाके पूछता हूँ कि तू पॉलिसी कब दे रहा है, वो नहीं आएगा आपके पास। You have to share, and insurance is a thesis. Don't tell me कि इंश्योरेंस में क्या है सिखाने को, बहुत कुछ है, ताकि you will agree. Otherwise आप लोग 17 years अभी भी सीख रहा हूँ। Yes, it's मेरा 20 साल हो गया, अभी भी मेरे को लगता है I don't even know 2 to 3%. जी जी बिल्कुल। It's a massive ocean. समंदर से भी बड़ा है, गहराई बहुत है, सीखने को बहुत है। आप जो भी नॉलेज पार्ट करोगे उसमें एक इंटरेस्ट आ जाएगी देखने को, सीखने को। दैट इज इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिमा जी अगर मैं आपको सही समझ पा रहा हूँ, सो यू आर टॉकिंग अबाउट कनेक्टिंग टू ईच एडवाइजर, यू आर टॉकिंग अबाउट एडिंग वैल्यू टू ईच एडवाइजर एंड हैविंग द इंटेंशन टू सपोर्ट एंड अंडरस्टैंड द फैमिली। और ये सारी चीज करने के लिए हमारे लीडर्स को खुद भी पढ़ाई करनी होगी, खुद के डेवलपमेंट पे भी काम करना होगा। बहुत जरूरी है। आप मरो तो स्वर जाएंगे ना, तो यू हैव टू नो व्हाट इट इज। इफ यू डोंट नो दैट, यू कांट डू इट। You definitely can't do it. So great insights for all our partners who is watching us right now live from Hema ji. So you need to develop yourself on a consistent basis to add value to your people, have that personal family connect and have an intention to contribute to your advisors. Some golden words are being spoken. All of you, if you are listening to us right now, एक कागज कलम लीजिए और इन सुनहरे अक्षरों को लिख लीजिए और इसको गांठ बांध लीजिए ताकि आप सक्सेसफुल लीडर बन सकें। So Hema ji, I will take the journey forward and I'll ask you another interesting question. What are the activities conducted by you to recruit and activate your team? अपने टीम को रिक्रूट और एक्टिवेट करने के लिए किस प्रकार की एक्टिविटीज आप करती हैं? तकी जी, सांस लेने के लिए आप क्या एक्टिविटी करते हो? What is your activity to breathe? वो बाय डिफॉल्ट होता है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। This is by default because you have to breathe insurance, you have to talk insurance, you have to sleep insurance. Okay. If you start thinking कि this is an activity, then it's an activity because activity में effort लगता है, मेहनत लगता है. I was one person who hated a partner model. ARS will vouch for it. ARS was very kind to, very subtly put कि in Raheja I met a different Hema Jairam. Raheja में I went to meet ARS because I was forced by the sales director. Otherwise, I didn't even want to see his face because I didn't believe. जिसमें मेरे को भरोसा नहीं है, I didn't want to do that. बोलते हैं ना कि नाम के वास्ते मैं गई ARS को मिलने के लिए. I was very arrogant, I was very aggressive, I was very dominant. वो सारे हुनर या सारे अच्छे गुण मेरे से निकाल दिए इन लोगों ने. मेरे को बहुत काम बना दिया, बहुत पेशेंस बना दिया. So activity every day is an activity. जैसे हम सांस लेते हैं. See, 125 crore population में अगर हम कहेंगे कि we don't have people, तो हमसे बड़ा जोकर कोई नहीं है दुनिया में. प्रॉब्लम क्या होती है, हमको लगता है कि हम एक्टिविटी उनके साथ करेंगे जिसके माथे पे लिखा है कि आई एम रेडी टू बी एन इंश्योरेंस एजेंट. नहीं, जब कोई माँ के घर में बच्चा पैदा होता है तो हाथ में लेके कभी ये नहीं कहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर इंश्योरेंस एजेंट बनेगा. दे टॉक अबाउट डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, आईएएस ऑफिसर बनेगा, बैंक का मैनेजर बनेगा, अफसर बनेगा,
इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। कोई माँ इस दुनिया में ये नहीं कह सकती कि जब मेरा बच्चा पैदा हुआ मैं कह रही हूँ। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट somebody to have that logo on their head or the tab on the head saying they are ready to be an insurance agent? Every day when I say it's an activity, you are meeting people, you are talking to people. सबके पास इंश्योरेंस के बारे में बात करो। मैंने जो नोटिस किया है मेरे टीम में, having quite a decent team or quite a large team is, लोगों में अभी भी है क्या कैसा बोलेंगे कि वी इंश्योरेंस, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। उसको लगेगा कि इसके पास करने को कुछ नहीं था कि आज ये एजेंट बन गया, इंश्योरेंस एजेंट बन गया, इसकी कोई औकात नहीं है तभी तो ये एजेंट बना है। टीम आउटसाइड इंडिया, प्लीज अंडरस्टैंड, ओनली इन इंडिया टू बिकम एन एजेंट वी आर गिविंग यू अ 6-day ट्रेनिंग। जब मैं एजेंट बनी थी मेरा 1 महीने का ट्रेनिंग था और मेरा रिटर्न पेपर था, 100 मार्क का पेपर था। इट वाज नॉट इजी, ट्रस्ट मी, इट वाज वेरी टफ। 21 days ट्रेनिंग एंड देन एन एग्जाम। इफ यू गो टू द वेस्टर्न कंट्रीज, इफ यू गो टू यूरोप, the charge for your license is you have to do ETC for a chartered financial planning, one of these education or license with you, which costs you around about 2 lakhs. ये पेपर पास करने के बाद आप एजेंट बनते हो। वी आर वेरी लकी इन इंडिया टुडे कि हम इतने आसानी से आपको लाइसेंस दे रहे हैं। जिस दिन ये लाइसेंस महंगा हो जाएगा, you will understand the value of it. It is not easy. Today we are very lucky to have a very, very, very comfortable system which allows you to do a 6-day training. Uske बावजूद IMD has made it still easier. IMD has made it still easier for you to do the business. So how to recruit is every day talk to people at least. ARS will vouch for it. ARS would have told everywhere 2:2:2, which was downloaded to us by Dr. Vincent from AIA Malaysia. 2 meetings every day, 2 presentations, you'll close 2 businesses or 2 advisors in the week. That has to be your mantra. You cannot say मैं 2 लोगों को मिला और 2 लोग ने कुछ जवाब नहीं दिया, मैं रुका कि वो जवाब देंगे, बाद में मैं और 2 लोगों को मिलूंगा। No. जैसा सांस लेना जरूरी है, नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। This has to be an ongoing process. Mandatory ongoing process. नहीं तो नहीं हो पाएगा काम। Another thing, अगर आपकी टीम बन गई है तो उसको 3 हिस्सों में बांटो। 3 हिस्सों में बांटो, 1 which is hot, 1 which is warm and 1 which is cold. ये hot क्या होती है? जिसको पैसा करना ही है, कुछ भी हो जाए, आप मुझे बस बताओ मैडम हमको पैसा बनाना है, क्या करना है, क्या सीखना है। They are self-motivated people. The second is उनको इच्छा है लेकिन थोड़ा they हिचकिचा रहे, they are a bit what you say apprehensive about what to do with. They need a bit of hand holding. Third is सपना है, सब कुछ है, but they don't know how to do. अगर एक क्लासरूम में 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों को टीचर पढ़ाती है। All the 60 students don't come first, right? You have the top 20, then you have the next 20, and the failures who are the last benchers, where the teacher has to give extra training for them, tuition का support, parents को बुलाओ. So that is your thing. This is what is your team. You're always going to have all these 3 people. Learn to divide them. Second thing is when you are recruiting somebody and you talk, don't talk for a while, but walk the mile with them. That is where you show that you are part of my family. I am part of your dream. You are part of your dream. If you just walk for a while and you dump them, then you have lost IMD or an advisor for life. It is very, very, very important. You have to be with them till they become independent. And they will become independent. Nothing is impossible. So again, as I told you, PPF, patience, perseverance, and fortitude. It is applicable here also. Wonderful, हेमा जी, मुझे आपकी बातों में ये don't walk for a while, walk for a mile, एक attitude adjustment करना पड़ेगा हम सबको अगर कामयाब पार्टनर बनना है। Because वो कहते हैं ना attitude decides your altitude, तो एक attitude adjustment if we are willing to do it and we are willing to adapt to PPF, like very बहुत खूबसूरती से आपने कहा कि सांस लेना और रिक्रूटमेंट करना एक जैसा है, so you cannot stop and उसके लिए extra initiative लेने की जरूरत नहीं, it comes naturally. Yeah, extra energy बोले तो कोविड और आपको आईसीयू में रहना पड़ेगा, so please avoid that. Let us take this journey ahead और अगले सवाल पे जाते हैं. So अगला सवाल है कि what is the ideal profile for recruitment? आपकी टिप्स क्या रहेगी हमारे यंग लीडर्स जो बड़ा करना चाहते हैं, जो अपना नाम कमाना चाहते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री, वो किस प्रकार के लोगों को रिक्रूट करें? हेमा जी, over to you. For all the people out there, recruit anybody and everybody. Okay, the combination has to be 5:15:30, 5 HNIs
15 housewife and other profile, 30 retired people. I am very clear कि I will always recruit one HNI a month. I don't care whether the prospect agrees to join me or doesn't agree to join me, but I will propose. I will see half the time what happens to our people is how can we go and approach that guy? वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? उसको क्या लगेगा कि मैं उसको इंश्योरेंस एजेंट बना रही हूँ या उसको मैं IMD कोड दे रही हूँ? कहीं वो समझ ले हम लोग ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं. Stop that. It's an adult society. People will either say a yes or a no. कोई आपके ऊपर मुकदमा नहीं चलाने वाला है कि तुमने कैसा आके पूछा. If that was the case, I couldn't have gone and spoken to Mammootty's son-in-law to ask him to become an agent. To the people who are not from the south and from the north and Bombay part or east and Gujarat side, Mammootty is what Amitabh is to Bombay or what Rajnikant is to Chennai. So Mammootty is one of those very Mammootty and Mohanlal are the top actors of Kerala. So when I proposed this to him, I proposed to his daughter. She said, I will not write an exam. Please don't give me all this headache. But when I proposed it to doctor, he said, ठीक है हेमा, अगर मुझे दे देंगे एग्जाम तो मैं लिखूंगा. 4 बार नहीं आया एग्जाम पे. 5वें बार उसको मैं ऑपरेशन थिएटर से ग्रीन गॉन उठा के मैं बोली कपड़े पहन के चलो गाड़ी लेकर उसको जाके मैं बिठाई हूँ. मेहनत बहुत करना पड़ता है. Doesn't happen. But प्रपोज करने में क्या हिचकिचाहट? Nothing. इतना हिम्मत रखो या इतना एटीट्यूड रखो कि कल को अगर आपको मोदी साहब मिल गए तो मोदी जी को भी बोलना आत्मनिर्भर बनाना है इंडिया को, तो हर घर में एक लाइसेंस दे दो. सर जी अगर आप ये अनाउंसमेंट कर देंगे तो सारे इंडस्ट्री वाले आपका प्रणाम करेंगे, सब आप ही को वोट देंगे. मेक इट पूछने में, दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. यू हैव अ राइट टू आस्क एवरीबडी एंड आर वी आस्किंग समथिंग फॉर आवरसेल्फ. हम उनको कह रहे हैं कि तुम अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए एक लाइसेंस लो. पूछने में क्या जाती है? नथिंग रॉन्ग इन इट. हम उनको गाड़ी खरीदने नहीं बोल रहे, बंगला खरीदने नहीं बोल रहे. हम उनको कह रहे हैं कि भाई दिस इज मैंडेटरी फॉर यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आपको अपना परिवार को सुखी रखना है. प्लीज समझो. प्रपोज टू एवरीबडी. एंड व्हाई आई सेड HNI टू ऑल द पार्टनर्स आउट देयर लाइक मी, बगैर पैसे का कुछ चलता नहीं है. सो HNI इज अ गाय हु गिव्स अस अ बिग प्रीमियम, और वो पैसे से सुकून मिलती है. बोलते हैं ना, इवन अ फॉरेन लैंड बिकम्स योर ओन लैंड व्हेन देयर इज मनी इन द बैंक. बड़ा सुकून मिलता है. अगर कोई कहेगा पैसे मेरे लिए मायने नहीं रखता है तो वो झूठ कह रहा है. डोंट गो बाय इट. इट इज जस्ट अ फॉल्स थिंग. यस, मनी डज मैटर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स very nicely said that पैसा importance रखता है. and 100% recruitment profile पे 5, 15, 30, 5 HNI, 15 housewives and 30 retired people. A powerful combination, and it's a proven and tested method. Again, and this 5 HNI should always be fresh, क्योंकि HNI कभी दोबारा काम नहीं करेगा. उसने एक बार जब दे दिया उसके बाद करेगा नहीं. तो आपका ये HNI का फुलफिलमेंट, वो फनल में पैसा आना बहुत जरूरी है. HNI को रिक्रूट करना बहुत जरूरी है. एंड फॉर पीपल हु आउटसाइड, हाँ जी, तो हमें कांस्टेंट प्रोस्पेक्टिंग पे रहना पड़ेगा हेमा जी HNIs के लिए. Yeah. And I will just show a small activity which I learned from my erstwhile people, where people say कि recruiting in insurance is very difficult. क्या बोल के recruit करेंगे? मान लो ये एक परिवार है. I hope all can see this. एक सुखी परिवार. Taki, just stop the slideshow for a second, please. Yes, Imagine, please continue. Yeah, it's a happy family. पति काम पे जा रहा है, बीवी हाउसवाइफ है, 2 बच्चे हैं, अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, अच्छा खासा परिवार, अच्छी नौकरी है, गाड़ी है, हर वीकेंड में होटल जाते हैं, खाने पे जाते हैं, पिक्चर्स देखने जाते हैं. सुखी परिवार. क्या होगा जब इस परिवार के कमाने वाले को कुछ हो जाए? परिवार आपकी बिखर गई. ये 2 कारण हो सकती है. एक मौत के कारण या जब कोई हैंडीकैप हो जाए. As a country, we are a very emotional country. हम अपने फैमिली के साथ बहुत रिलेशन रखते हैं. तो पूरे माँ का घर वाला, ससुराल वाले, भाई बहन, दोस्त, सब लोग इस परिवार को समेट के सीधा कर देंगे. अभी ये जो पहली वाली पेपर और दूसरी वाली पेपर में ये फर्क है कि तकी विल एग्री, भले वही शेप में आ गई. वो पहले पेपर में और ये पेपर में फर्क क्या है? इसमें बहुत सारी दरारें हैं.
there are a lot of crumble on the paper. दुनिया में ऐसी कोई तकनीक नहीं है, कोई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी नहीं है जो इसको सीधा करे. That is your emotional loss. Correct. जब कमाने वाले को कुछ हो जाता है, that is your emotional loss, right? पर financial loss ठीक करना है तो you have to talk about it. आप इस परिवार का एक हिस्सा बन सकते हो जहां आप उसको वो पुराना वाला शेप दे सकते हो. So insurance is this important. It is this important. This is as plain as, it's as plain as water, as pure as earth, as fresh air is. हवा जैसा, it is as fresh. You don't need any adjectives. इसमें आपको कुछ, you don't have to decorate it. आप साफ पानी पीना चाहते हो? We want a pure earth. We want fresh air. That is insurance. It is how you put across to them. It is a need. It is not a want. It is a need for every family. That is how it goes. Hema ji, for the benefit of our audience who are non-Hindi speaking, can I request you to do this activity once again, or just briefly explain the activity once again in English, please? I had showed you all this paper where I said when it was a plain paper, it was a perfect paper. It was, I'll give you a fresh. Let us assume this is a happy family, husband working in a nice corporate, handsome salary, 6-digit figure, wife, housewife, 2 children going to a good school. Every weekend they have a party. I can't say a party, they go to a restaurant to eat, watch a movie. What happens when something happens to the breadwinner? All of you all agree, the family is crumbled. India is a very emotional country. We are very family oriented, emotionally bound. We all of us are emotional fools. The family, the friends, the relatives, everybody will come and stand by to get back the family into shape. The difference between the old paper and this is there are lots of creases. Today, no technology, no science can challenge and say, okay, we will remove these creases. The creases are the emotional loss of the family. But to get it back to shape, we have to give the financial loss. We have to help them with the financial loss. So when you are becoming a part of insurance or when you are recruiting, you are not understanding that you are a part of the making and breaking of a family. You are there to do that. No other industry can give you that kind of feeling of contentment when you say, okay, I am there to make a family intact. I am there. See, it is very easy to become a Lions Club member. You can become a Lions Club member or a Rotarian or do blood donation camp. Paper में photo आ गई, हमने 50 साइकिल donate कर दिया, CSR activity कर दिया. लेकिन इंश्योरेंस IMD या एजेंट बनने के लिए जिगर चाहिए. You need guts. जहाँ हम सुबह उठ के बोलेंगे कि हम 2 परिवार को इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे. इसका तो हम होर्डिंग नहीं लगा सकते हैं कोई मेन रोड पे या कोई सर्कल पे जहाँ हम कहेंगे कि ये गाड़ी खरीदो, यू कैन पुट अ कार, घर खरीदो, यू कैन पुट अ बिग बैनर. लेकिन हम ये लगा नहीं सकते कि कोई मर जाए तो देखो तुम्हारी बीवी और बच्चों की क्या हो जाएगी. इट कैन नॉट हैपन दैट वे. सो दैट्स द रीजन आई से इट इज वन ऑफ द मोस्ट नोबल वर्क. ये इंडस्ट्री में उतरने के लिए, to get into this industry, you need guts and jigger. So anybody who's working, I'll say you have 10% lesser guts than us. We have 100% more guts than you. Hema ji, I must appreciate the conviction you have on agency पाना. एक अपने आप में बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा इतिहास रचना है जिंदगी में. guts चाहिए बिजनेस को. What I am seeing is आप बिजनेस को जैसे देखती हैं वो बहुत अलग है. That is something very different and unique आपने. I must give you a compliment that आपकी सोच लाइफ इंश्योरेंस को लेकर और समाज में इसकी जरूरत को लेकर is completely different. जो दुनिया हमारे पार्टनर्स को सिखाती है उससे डिफरेंट. जी, this is personal experience. जब हम बैंगलोर आए हमारे पास कुछ नहीं था. My husband was into granite mining and ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ के देता है. वीरप्पन had kidnapped Rajkumar and we had our mines in that area. Oh my God. ना नौकरी था ना बिजनेस था और एक बीमार बच्चा था. And we were in Bangalore with nothing in hand except a 75,000 rupees of money. Because of Tamil Nadu Karnataka border issues, all the accounts were freezed. कुछ नहीं था. To start with a 75,000 corpus in hand and a rented house in Bangalore with a sick child whose expense was 1,000 rupees a day, it is not easy. This business gave me my name, my fame. Today I have 2 apartments, I have a site. I got my daughter married in one of the most prestigious palace ground in Bangalore. मैं जब आई थी, literally I can say लाचार, बेबस, अबला. Honestly, that was the case.
आज कुछ नहीं तो भी of course I hope there is no IT department people. 2 किलो का सोना खरीदा in a span of 20 years. इतना करना ये business में, it is there. And the kind of people I have earned. Narayan Pillai said कि she is a walking encyclopedia. Hospital का, yes, that was a personal experience जिस वजह से I got so many people. But whether it's a political contact or whether it's a corporate contact, bureaucrat contact, everything came to me because of this industry. मेरे अपने मंदिर के बाद अगर मेरा कोई दूसरा मंदिर है तो this is this business. Because आज मैं जो कुछ हूँ, whatever I am, it is because of this industry. तो मैं इस industry को पूछती हूँ. और जब आप इस इंडस्ट्री को पूछते हो ना, तो you don't like it when somebody speaks ill about it. It's the people who make and break the industry. It's not the brand. It is the people who make the brand. So when you are the brand and if you disrespect your own industry, जिसमें आप खा रहे हो, पी रहे हो, हर चीज कर रहे हो, आज मेरी हर कुछ, मेरा नाम, शख्सियत, ऐशो आराम, पैसा, हर चीज इस इंडस्ट्री से आई है. And you can't forget that. So if somebody will ask me, can you prove it? I'm a living example. I'm a living example to prove it to you. You are an inspiration for all, and compliments to the struggle and the achievement. Significant, बहुत बड़ी achievements है आपकी, और हम चाहेंगे कि हर शहर में हजारों हेमा जयराम बने. आज हमें जो सुन रहे हैं, not only the women but also the men get inspired and do achievements like yours. So मैं तो आदमियों को बोलूंगी, हमारे पास समय की बाधाएं, we can't work beyond. आप लोग तो लकी हो, पूरी दुनिया आपकी है. यू कैन डू 100 times बेटर देन मी. लेकिन एक है, ख्वाब देखना मत छोड़ो, इच्छाएं रखना मत छोड़ो, अपने इच्छाओं को कभी मत दबाओ. प्लीज लिव, वॉक योर ड्रीम्स, ड्रीम 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 एंड वर्क टुवर्ड्स योर ड्रीम. आपकी ख्वाब अपनी है, आपकी इच्छाएं अपनी है, उसको घुटने मत दो, उसको मरने मत दो. डोंट अलाउ एक्सटर्नल फैक्टर्स टू किल इट. You can still do it. Wonderful, Hema ji. So the next question is again एक CAP से पूछने वाला question कि L1 और L2 में क्या रखा है, importance क्या है इसकी, इसके बारे में थोड़ा बताएं. अकेले बहुत दौड़ लिया तक की, टेंशन वाला इनकम बहुत कमा लिया जिंदगी में. अभी सच कहूं तो पेंशन वाला इनकम कमा रही हूँ. So your L1 and L2, अपने को गवर्नमेंट की पेंशन नहीं चाहिए. We don't. वो बहुत लिमिटेड होता है, इतना ही देता है, उसका फिक्स्ड अमाउंट होता है. यहाँ पर द ब्यूटी इज यू कैन इवन डिसाइड व्हाट इज योर पेंशन. L1 एंड L2, ओके, व्हेन आई टॉक टू माय टीम, अगर बैंगलोर जैसे शहर में अगर आप रहो, बिकॉज आई कांट टॉक अबाउट अदर सिटीज, बॉम्बे की हूँ भले, बट आई एम आउट ऑफ बॉम्बे, सिर्फ मैका है वहां पर. अब बैंगलोर में अगर आपको एक 2 अपार्टमेंट, एक 2 bedroom हॉल किचन लेना है, बैंगलोर डजंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 bedroom, वेरी लिमिटेड. आप आउटस्कर्ट्स में जाओ तो आपको 60 लाख में मिल जाती है. तो 60 लाख का अगर आप एक घर लो तो आपको एवरेज रेंट आती है 15 से 18 हजार. अगर मैं आज चाहूं कि मुझे 10 घर होना है ताकि मेरे को 1.5 लाख का अर्निंग आवे, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू एक्यूमुलेट 5 crores or 6 crores and buy an apartment, 10 apartments and rent it out? No. So according to me, your L1, L2 is your apartments. कोई चॉल बनाएगा, कोई 1 bedroom बनाएगा, कोई 2 bedroom बनाएगा, कोई विला बनाएगा. योर टीम्स, आई लुक एट माई टीम्स एज दैट. ये मेरा विला वाला है, ये मेरा चॉल वाला है, ये मेरा 2 bedroom वाला है, और हर घर से मेरे को कुछ ना कुछ रेंट आने वाला है. I can that way say I am the richest woman. बगैर घर बनाए, अगर मैं घर लेके बनाऊं तो उसका मैं EMI भरूं, उसके मैं लोन के पीछे भागूं, बैंक को इतना इंटरेस्ट हो. यहाँ बगैर इंटरेस्ट का आई हैव क्रिएटेड द लोएस्ट पार्टनर. द AP norm says 10 lakhs a year, जिसमें 100% एक चॉल कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा. वो चॉल का आपको कुछ नहीं तो भी कुछ ना कुछ तो पैसा आएगा ही सालाना. अगर आप 3.6% भी पकड़ के चलो, 36,000 आ गया, 3,000 का आपको चॉल का मिल रहा है. 10 चॉल बना लो, 3.5 लाख आपको वहां से आ गया. 1 bedroom किचन, every team. That's why I said every partner is important. Your L1, L2 is your chawl, your 1 bedroom, 2 bedroom. Then go for the villa, जहां पर आपको 1 महीने का एक विला से मिल जाएगा 1.5-2 लाख. तो इट इज अगेन अ जर्नी. हम पहले चॉल से स्टार्ट करते हैं, फिर जाके विला पे पहुंचते हैं, बिकॉज बैंगलोर इज वेरी फेमस फॉर विला कॉन्सेप्ट. सो लुक एट योर पार्टनर्स. सो व्हेन यू लुक एट योर पार्टनर्स एज दैट, you are going to be part of that grooming. So when I say groom your partner, it is not क्योंकि उसको आएगा सबसे ज्यादा 70%, मेरे को क्या आएगा भाई, वो तुम्हारा अपार्टमेंट है, तुम्हारा लाइफ लॉन्ग अपार्टमेंट है, जहां पर आपको रेंट आने वाला है बगैर काम किए. तो
तो स्टार्टिंग जब बिल्डिंग बन रही है तो थोड़ा मेहनत तो करो, ऐसे अपार्टमेंट्स विलास चौल बना के छोड़ दो, जिंदगी आराम हो जाती है। तो दिस इज द बेस्ट अर्निंग, अपना पैसे से ज्यादा मजा आती है L1 L2 में। आई हैव माई स्टाफ हु इज माई मैन फ्राइडे सैयद विथ मी, जिसको मैं बोलती हूँ जब भी इंसल्ट में कहा सैयद पहला स्टेटमेंट निकाल के दे L1 L2 में क्या आया, डायरेक्ट टीम का मजा नहीं आता है। फर्स्ट हिज ओनली जॉब आफ्टर पे आउट कम दिस, मैडम अभी तक आ नहीं रहा है सिस्टम में, अभी तक उन लोगों ने अपलोड नहीं किया, बट दैट L1 L2 इज अ खुशी। आज कितने लोग, अनदर थिंग, अगर आप घर लिया है, आपने रेंट पे दिया है, कोविड जैसा सिचुएशन आया, घर खाली हो गया, देयर इज नो एश्योरेंस, बट माई अपार्टमेंट में ना डिप्रिसिएशन होगा, कुछ नहीं होगा, एप्रिसिएशन ही होगा, क्योंकि कल को वो निकल भी गए तो वो टीम हमारी हो गई। इन ऑल पैरामीटर्स दिस अपार्टमेंट ऑफ माइन इज गोइंग टू गेट मी मनी। इट इज योर विल एंड विश कि आप कितना बड़ा घर चाहते हो, वो आपकी इच्छा है, दैट इज टोटली इन योर हैंड। सो इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स दिस वे, देन उसमें और मजा है ना, डेफिनेटली उसमें और मजा है। कि कोई कैपिंग नहीं है, हम 100 घर 200 घर 300 घर, अभी तक कंपनी ने इस पर कैप नहीं लगाया। बगैर अगर इनकम टैक्स के प्रॉब्लम के बगैर कोई स्क्रूटनी, बगैर कोई इंक्वायरी आप कर सकते हो। आप कोई भी शहर में रखो, आपको कौन पूछने वाला है? आप मुझे एक बताओ, इसमें कोई बंदिश है? इज देयर एनी restriction that you cannot have a house in Udupi? I have teams in Bombay, I have teams in Mangalore, Udupi, Belgaum, Dharwad, Bangalore being the base. कितना अच्छा लगता है, and all our extended families, trust me, you have to go somewhere. All these partners are ready to be a part of your life, they're ready to be with you. You need something, you make a call, they say, please welcome ma'am, we are there by you. You are not only creating an asset for you in the form of money, but you're creating an asset in the form of emotions, which money can't buy. Both ways, it's a win-win situation. Again, it is your aptitude and attitude. And I always, when you'll ask me about recruitment also, recruit a person with no skill, no problem. But please don't recruit a person who doesn't have the attitude. That is very important, because I cannot, create an attitude in a person, but I can always help them when developing their skill. But if there is no right attitude and aptitude, very difficult to create the skill in them. That is very difficult. I had the privilege of once meeting Mr. Zarsik Desai, who was part of the JRD group. He was living in Bangalore, and I met him through Venkatesh Prasad's wife. He was a chairman for Titan also. So Zarsik Desai and I had a long chat, because I was then in Tata's. Very nice guy. Gave me a lot of knowledge, and he said, Hema, जिंदगी में 3 टाइप के लोग होते हैं. One is the leader, second is the follower. So a leader leads by example, and the follower folds his hands and follows you. So ऐसे तीसरा वाला कौन है? ना वो लीडर है ना फॉलोअर है. तो ऐसे उनके लिए क्या है? बोले उनके लिए दरवाजा है. So this was a very big lesson I learned from Mr. Desai. God rest his soul. It is 2.5 years since he passed away, but it was a very big learning. So when you are a leader, you need that kind of patience to help your followers, because if you guide your followers properly, they become good leaders. Okay, so बहुत बढ़िया हेमा जी, आपने एक नया कॉन्सेप्ट लाया है कि भाई आप विलास बनाएं और चौल बनाएं, और हर L1 L2 को देखने का नजरिया बदल दिया आपने। विला आप कोई अच्छे कम्युनिटी में बनाओ, ताकि सब सहूलियत है, क्लब हाउस है, हर कुछ है. When you enjoy the best. बहुत वेरी वेल सेड हेमा जी. द वे वी लुक एट L1 L2, आई एम श्योर जो पार्टनर्स हमें सुन रहे हैं, दे आर गेटिंग अ डिफरेंट व्यू ऑन द L1 L2 कॉन्सेप्ट. सो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ाते हैं जर्नी को हेमा जी. एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू, हाउ डू यू एंगेज विद इनएक्टिव एडवाइजर्स? आप जो इनएक्टिव हो गए हैं एंड दे आर स्टॉप रिस्पॉन्डिंग, ऑफिस नहीं आ रहे, हाउ डू यू एंगेज विद देम? पहले उनके घर जाके देखो क्यों नहीं आ रहे. अगर 7 साल के बाद एक बंदे से हमने 5 लाख निकलवाया तो मजाक नहीं है. बी इन कांस्टेंट टच. हर बार जरूरी नहीं है कि आप इंश्योरेंस ही बोलो. वो कहते हैं ना, एक बड़ा सा देयर इज अ बिग स्टोन, आप उसको मारते हो, यू कीप ऑन हिटिंग इट. With which blow it breaks, we don't know, but every blow was important. You cannot say the 150th blow broke the stone, so that is only important. No, every blow is important, but don't stop the effort. Don't please stop the effort. इसके लिए ये मत कहना कि मैं एक ऑटो वाले के घर गया था, मैं 4 महीना चक्कर मारा, he is not even able to take care of his day-to-day needs. No, please don't do that. Little common sense we also have to use. So in the initial days, when I say
meet the advisor on day one. It is to get an idea of the family background. उनकी connections क्या है, वो किन किन लोगों को जानते हैं. That is important. And only अगर आपका घर होगा तो आप जाके विजिट नहीं करोगे. रेंट बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, घर का क्या हालत बनाया है, अंदर तोड़ दिया, कुछ एक्स्ट्रा कर दिया. Don't you go and visit if it's your property. You will not say मेरा सब जगह पे property है, मैं नहीं जाऊंगा, right? So when you look at a property, that is a materialistic value. यहाँ पर तो खून और फ्लैश है भाई. इनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो, आप प्रॉपर्टी को थोड़ा ऑल्टर कर सकते हो. चॉल को आप 1 रूम बना सकते हो, 1 रूम बेड हॉल किचन को आप 2 बेडरूम बना सकते हो. यू हैव द प्रिविलेज, उसको आप विला बना सकते हो. Why are you not utilizing it? That is in your hand how you utilize it. So you look at it. अपना गाड़ी होगा तो आदमी रख के धुला के अंदर साफ करके करते हो ना. You have to just adapt that thought process with your partners. Be with them, be part of them. And luckily, Taki, I should say I have got some of the best partners in my life. Some of the best partners. And I'm very privileged and happy that they love me equally dearly. Unbelievable. So as a family, it is husband, 2 बच्चे, of course, दामाद, grandchildren है, but my partners and my advisors are my biggest extended family today. So if you all talk about my achievement and my accolades and all, I say it is 1% me and 99% them for having believed me and joined me. So I hold a big salutations to them. Great, great, great. Actually, ये जो आप बता रही हैं that people have been extremely good and responsive to you. This has actually happened because of the amount of value add you have done. You've actually built this relationship. It has not come overnight, or you've not been lucky in getting such people. You have to create relationships and you have to invest in those relationships. I remember 3-4 questions pehle I asked you a question and you spoke about you have to genuinely want the family to do well. So when you think like that, people also think like that with you. ताकि जब आप किसी के पास जाते हो इंश्योरेंस बेचने के लिए भी या उनको आप उनके बारे में सोच रहे हो, आप अपने बारे में मत सोचो. So when you tell somebody, I am coming free of cost to be part of your dream, to help you achieve your dream, वो ना क्यों बोलेगा? If you go with that attitude कि भाई तू अगर 10 लाख कर दिया तो मेरे को लगता है मेरे को 2.1 लाख आ जाएगा, तो तू 10 लाख कब करेगा? It is the same thing. At the end of the day, it's the same thing. It is how you change your attitude when you talk to that person. Please be part, and for that you have to be emotional. Mine is 90% rational and 10% sorry, it's a 90% emotional and 10% rational. Insurance kab jati hai? Because it's an emotional subject. So you have to exhibit that emotion. You have to be emotional in that subject. Otherwise it doesn't work. Definitely it doesn't work. You have to be part of that family. Himaji, indeed, now we are talking about not only about insurance, we are talking about PR. We are talking about the basic philosophy and intentions. So ये conversation insurance से कहीं ज़्यादा है. इंसानियत और insurance का एक बहुत गहरा link आप दिखा रही हैं, which is जब मैं छोटी थी मेरी मम्मी ने my mother is a very strong influence in my life. तो मेरे मम्मी ने एक पाठ पढ़ाया था मुझे. She said ये माँ जब होते हैं ना, जब बच्चे आ जाते हैं उसको ऐसे समेट के रखती है. सुंदर सा बगीचा है, it's a beautiful garden, आप बच्चों को समेट के रखते हो. But if you माँ तो पेड़ होती है, she is like a tree. But if you want more trees, उस बच्चों को वही बगीचे में थोड़ा दूर प्लांट करो. Allow them to become trees. अगर आप ऐसे झकेड़ के रखोगे ना, the roots will get entwined. The trees will not. The mother tree will stand, but the children trees will all die. She says, अपने निगरानी में रखो. Have a vision on them. जब रोकना है, जब ठोकना है ठोको. But within your garden, put a fence. So your partners are that way. You cannot keep them under your command. You cannot keep them. Today, when I look at my downlines, they are far, 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 far ahead of me, Taki. What I achieved in 20 years, some of my partners have achieved in 3-4 years. मैं गुण गा सकती हूँ. ये तब होता है जब आप जानो. I can say so many of my partners are living my dreams, are walking my dreams. I see मेरा अंश मेरे को हर इंसान में दिखता है. It is such a pride to say that. So आपके बच्चे हो गए ना, उम्र का, let us not bring the age factor into here. तो आपका इतना बड़ा बगीचा है, पूरा इंडिया आपका बगीचा है, आप पौधे लगा रहे हो, वो बढ़ रहा है. You are planting so many पौधाs in every state, every district, every branch. जब वो फूलता है, फैलता है, it's flowering and all. It's a nice feeling to see it.
आप नजरिया चेंज करो, इंश्योरेंस को प्रोडक्ट की तरफ मत देखो. आई अगेन एंड अगेन से डोंट लुक एट इट एज अ प्रोडक्ट. इट्स अ डिफरेंट फीलिंग. ये एक जज्बात है, ये चीज है. 100%. Wonderful, It wonderful. is. Indeed, lot of new dimensions. और जो partners who are listening and partners who are listening to us, आप थोड़ा दिल इस्तेमाल करें. विवेक सर भी हमेशा कहते थे इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको थोड़ा दिल चाहिए और थोड़ा विल. और आपने दिल और विल का व्याख्या आज हमें दिखा दी. You have shown us the abstracts of the heart and the intention. So तकी जी, इंडिया में सब दिल वाले हैं, दिल की कोई कमी नहीं है हमारे देश में. बिल्कुल हमारा कल्चर ही ऐसा है. तो अगला सवाल है आपका डेली रूटीन. अब मुझे पता है आप अपने हेल्थ की भी बहुत कॉन्शियस हैं हेमा जी. यू आर वन ऑफ द फिटेस्ट पीपल वी हैव इन योर एज कैटेगरी एंड वेरी इंडीड. आपसे जो यंग है उनको भी आप टफ कंपटीशन देती हैं. तो ये आपके सौंदर्य नहीं, मानसिक और आपके रूह के सौंदर्य का राज बताएं. डेली आपका रूटीन क्या है? फिजिकल सौंदर्य मैं मम्मी डैडी को जाती है, वो उनकी जीन्स है, तो मेरे माँ बाप के देन है, उनकी आशीर्वाद है, मैं बोल सकती हूँ. डेली रूटीन, आई प्रैक्टिस योगा, आई डू अ लॉट ऑफ वॉकिंग एंड खाने का बड़ा शौकीन हूँ. बट ऑफ लेट आई हैव रियलाइज्ड द हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी कोरिलेट्स विद ईच अदर. सही खाओ, जितना शरीर तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, और वट एवर यू से इन हिंदी, योर माइंड ऑल्सो शुड बी हेल्दी, बिकॉज healthy mind and healthy body walks parallel with each other. If one of them is unhealthy, you cannot succeed. It is very, very important. And in this business, give a lot of time for self-grooming. When I say self-grooming, I'm not saying parlor jao, gym jao, apne aap ko sundar banao. No. Self-grooming is grooming yourself, equipping yourself with more and more knowledge. Understanding a lot, whether it is insurance, current affairs, anything. You have to talk to people. You need to know. You need to know what is happening around the world. Some knowledge in you so that you can share it with somebody. So this is my daily routine. I don't watch any of the Dharavahis, which I can very proudly say. Ye Saas Chudel, Nanan Chudel, Bahu Chudel, Beti Chudel, Beta Chudel. I don't watch any of those Dharavahis. I spend my time more in the current affairs because paper padhne ko time nahi mila, to I am a lot into CNN, BBC, news dekho. कम से कम क्या चल रहा है दुनिया में तो पता चल जाता है. सो आई एम नॉट somebody who is a धारावाही type because I feel it's waste of time. अगर वही 3 घंटे कोई और चीज में आप लगा लो, you get to learn a lot, understand a lot more. And once upon a time I was a voracious reader. I would have completed around about 800 books. I love reading because when you read, आप अपने दुनिया में चले जाते हो. जब उस बुक में जितने भी पात्र हैं उनके परिवार के आप हिस्सा बन जाते हो. So these are my daily routines. And COVID में It has been a blessing in disguise. अपना घर को मैं महसूस करने लगी. मुझे पता लगा कि अच्छा मेरे घर में ये चीज है. This was the first time I'm experiencing home. 2 grandchildren I have. हफ्ते में 2 बार आ जाते हैं, तो 2-3 घंटा उनके साथ निकल जाता है. This is my regular routine. I'm not a socialite where I go out partying, pubbing and all. I don't do all those things, but I'm happy doing all these things. Wonderful, wonderful, Hema ji. Indeed. आपने बताया कि आप थोड़ा मार्केट के बारे में जानना, करंट अफेयर्स के बारे में जानना, ये आपको अपने काम में भी मदद करता होगा. आई एम श्योर. क्योंकि जब आप किसी को मिलने जाओगे तो हाउ डू यू स्टार्ट. हम किसी के घर जाके ये नहीं बोल सकते मैं कोटक से आया हूँ, ठीक है, हमारे पास 3 अच्छा प्रोडक्ट है, एक स्मार्ट लाइफ लो, एक गारंटी प्रोडक्ट लो, आप रखो. या आप ये जाके नहीं बोल सकते मेरा नाम हेमा जयराम है, आई एम मैरिड, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी की शादी हो गई, ये मेरे बारे में, आप अपने बारे में बताओ. तो वो वही जवाब देगा, मेरा नाम तकी मोहम्मद है, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे अभी होने को हैं, मैं ये कंपनी में ट्रेनी हेड हूं साउथ इंडिया का. बात खत्म. उसके बाद क्या बोलोगे? एंड वन मोर थिंग टू ऑल द पार्टनर्स एंड एडवाइजर्स आउट देयर इज, कोई भी क्लाइंट के पास या कोई भी रिक्रूटमेंट को जाने के पहले डू अ बिट ऑफ प्रोफाइलिंग ऑफ दैट पर्सन. थोड़ा जानो कि वो बंदा है क्या, वो बंदी है क्या. So when you know 40% of your battle is won, rest 60% में 40% is your presentation, 20% is your luck. That is very important. Thank you. मतलब जो पार्टनर सुन रहे हैं वो देखिए कॉल पे जाने के पहले प्रिपरेशन. ये हेमा जी is taking us back. I've been in training and sales training for several years and आप जो बोल रही हैं यही सारी चीजें हैं जो
जो व्याकरण है, ग्रामर है लाइफ इंश्योरेंस सेल्स का, दैट नो योर कस्टमर वेल, प्रेपरेशन करें, अपडेटेड रहे मार्केट में क्या चल रहा है, ताकि किसी करंट अफेयर्स के कस्टमर कभी कभी हमारा प्रोडक्ट नहीं हमें खरीदता है, तो वो देखना चाहता है कि सामने जो हेमा जी बैठे हैं उनको पता चल रहा है यूएस इलेक्शन में क्या हो रहा है, मार्केट की वीटे पर जो ग्रोथ हो रही है वो कैसी हो रही है, एंड दे ट्राई टू टॉक अबाउट यू कि पैंडेमिक से क्या हुआ है. सो आप जब शिक्षित हैं और आपको करंट अफेयर्स की कंट्रोल है, दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि सर्वे के अनुसार देखा गया है 99% कस्टमर्स प्रोडक्ट खरीदने के बाद भूल जाते हैं कि क्या खरीदा, पर किससे खरीदा वो याद रहता है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. बहुत इंटरेस्टिंग. इनफैक्ट हेमा जी, मैं आपसे मतलब वीक में 1-2 बार तो मिल ही लेता हूं, लेकिन आज की जो कन्वर्सेशन है वो बहुत इंगेजिंग है और कुछ अलग अलग पॉइंट्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स हेमा जी. माय प्लेजर. अगला सवाल की तरफ जाते हैं हेमा जी. हाउ डू यू रिक्रूट, क्या स्क्रिप्ट फॉलो करती हैं आप? मैं स्क्रिप्ट आपको क्या बोलूं, मेरा स्क्रिप्ट मेरा दिल है. ओके, आई विल टेल यू व्हाट आई डू अपार्ट फ्रॉम दिस. एक तो आई हैव टू डू रेगुलर सीओपीज, जहां पर हम एक्टिविटीज करते हैं टीम को बढ़ावा करने के लिए. आई कंडक्ट मास सीओपीज, कभी पेपर में ऐड दे दिया, दैट इज योर रिटेल क्राउड. बट आई एम वेरी गुड इन 1-to-1. आई एम अ पीपल्स पर्सन, आई लव मीटिंग पीपल, सो माई 1-to-1 doesn't stop. My 1-to-1 is a regular thing because every individual is different. What is applicable to you might not be applicable to me. If you'll tell me, Hema ji, आपको ये हफ्ते में 10 लोगों को मिलना है और वो 10 लोगों को 1-to-1 जाके बात करके you have to recruit them, it is much easier for me than talking in a gathering. I can talk in a gathering, but I'm talking about recruitment. And at the end of the day, according to me, what is a script you have to use to recruit is sell the dream. It is the opportunity that is available with us, which is a dream. That dream you sell, it becomes much easier. It becomes much easier. You don't have to be what you say, tech savvy or language savvy. You don't have to. दिल से बात करो. आप दिल से बात करो. अगर आप अपने जर्नी का भी एग्जाम्पल लोगे, आप किसी और का जर्नी के बारे में मत बोलो. अगर आप अपना एक्सपीरियंस खुद बता के किसी को आप रिक्रूट करने जाओगे, इट्स अ टोटली डिफरेंट फीलिंग. It is totally, you don't have to have particular wordings. If I use this connotations only, it's going to work. If I don't use this kind of sentences, it's not going to work. No, nothing of that sort. It is, as I told you, breathing. पार्क में वॉकिंग में जाओ, आपको 10 लोग दिखेंगे. 1 महीना वॉकिंग करो, मे बी द नेक्स्ट मंथ उसमें से एक बंदा आ जाएगा. इट इज connect, do it, same thing again and again. You cannot stop it. And this is a profession, it's a practice. It's not a job, it's a practice. तो अगर हम प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे, डांसर हो, सिंगर हो, कोई भी हो, प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे, we lose it. तो recruitment is also a practice. If you stop that practice, you have lost it. There has to be no particular, speak from your heart. Wherever you go, speak from your heart. And trust me, you will win it. There is no way you can lose it. You will. So बहुत ही I mean, you are actually showing ये जज्बात का ही है. आपके हर बात में ये जज्बात का खेल जो है वो आ रहा है. It's coming like you have to be in the business with the core of your heart, and that's what is going to create a difference. Very interesting concept. You cannot look at it as a part-time job. This is not a part-time job. Okay, ये आपका माँ जब खाना बनाती है, एक दिन बहुत अच्छा बनता है, एक दिन ओके बनता है, बेचारी वही एफर्ट डालती होगी. एवरीथिंग आपका ये बिजनेस भी ऐसा ही है. आप वही एफर्ट डालो, कभी कभी अच्छा निकल जाता है, कभी कभी सब करने के बाद भी खाना जल जाता है, या तो कुछ तो ज्यादा हो गया कि पूरा का पूरा जायका बिगड़ गया. दैट डजंट मीन यू स्टॉप कुकिंग, यू स्टॉप ईटिंग, राइट? It is a part of your life. You have come into a business knowing it. And yes, one more thing is, if you're an entrepreneur, you have to invest in your own business. When I say you have to invest in your own business, it's your time, your energy, your knowledge. You have to create ways of doing COPs. You cannot say, I will only follow 1-to-1 and then it will happen. Today, I can afford to say I'll follow 1-to-1 because I got a large team. I've got more than 120 partners. But initial stages, you have to do it. You have to engage yourself more to get the best out of it. Otherwise, it doesn't work. You cannot say it is not happening. Correct. Indeed, in the also the scripts which are taught, they are not specific. They are आपको एक कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम एक स्ट्रक्चर एक दे सकता है, ये एक स्केलेटन दे सकता है,
उसमें रंग भरना, रूप भरना वो इंडिविजुअल पार्टनर की ड्यूटी होती है, जो आपको वहां पर तभी आप जज कर सकते हैं जब आप हाथ से कनेक्टेड हो. सो ऑल These are all our basics तक की. जब हम स्कूल जाते थे, आपको पता है टीचर क्या बोलती थी? रटो मत, डोंट रीड बाय हार्ट. आप समझो, फिर अपने लैंग्वेज में उसको लिखो. करेक्ट. हम वी आर द बिगेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री. हमारे कंट्री में कुछ नहीं तो भी 40,000 करोड़ माए हैं. Every mother is different, every delivery is different. People outside, every recruitment is different. Just be yourself and use that practice. We have example and experience for everything. All fathers are not same, all mothers are not same. Please. तो आप अपने हर एक एडवाइजर की लाइसेंसिंग को एक बच्चे की पैदाइश से कंपेयर करते हैं. सेम काइंड ऑफ पेन एंड इमोशन व्हिच यू आर टेकिंग. 100%. कोई बच्चा तो जन्म लेने के पहले ही इतना तंग करने लगता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते. अभी जन्म दे दिया, पालना ही है, करे क्या? उसको पालना है. भले अपना फेवरेट्स होती है डेफिनेटली. ये मुझे तंग नहीं करता, ये मेरा लाडला है, ये मेरा सुनता है, ये बहुत गाली देता है, बोलते हैं ना. लेकिन बच्चों, माँ को वो लोले लंगड़े बच्चे से ही ज्यादा प्यार होती है, बिकॉज दे फील दैट सॉफ्ट कॉर्नर. वो एहसास अपने में ले आ जाओ. मेरा नाम जोकर पिक्चर याद रखो पीपल, एंड देन यू विल गेट इट. Wonderful. So, it's not only insurance, you are teaching us life, Hema ji. जिंदगी के बारे में सीख रहा हूँ आपके साथ बैठ. Thank you so much. Hema ji, insurance is life only. Correct. Life cannot be without life insurance, and life insurance cannot be without. Yes. So, now, how are you adjusting to the new normal? अभी बिल्कुल चेंज हो गई चीजें. So, ये नया नॉर्मल में आपके काम के तरीके में, स्टाइल में कोई चेंज आया? Has there been a change in the way you work? How are you adjusting to the change, Hema ji? रोज सुबह उठ के मैं भगवान का हाथ जोड़ने के बाद करुणा देवी को हाथ जोड़ती हूँ. यू आर ऑमनी प्रेजेंट. आप भगवान जैसे हो, दिखते नहीं हो लेकिन हर जगह हो. लेकिन हमारे वहां दर्शन मत देना, एक प्रेयर उनके लिए होती है. सो आई डोंट से करुणा एक बीमारी. करुणा इज गॉड. जैसा भगवान दिखता नहीं है, ये करुणा भी दिखता नहीं है. पता नहीं किधर है, लेकिन कब कहाँ आए अपना दर्शन देवे कोई नहीं जानता है. सो कीप द करुणा इन गुड ह्यूमर. Yes, using a lot of digital platform now because I'm able to connect with more of the people on Zoom. I can say my travel time has been saved immensely. Of course, in insurance, the physical presence and talking is got more value than your telephone conversations or Zoom call conversations. But reaching out to more people in digital platform has become much easier than on a day-to-day affair. Agar in initial days, if I was doing 2 calls in Bangalore traffic or 3, now I'm able to do 5 calls in a day because you're connecting with them only on the digital platform. And the business is happening. It's not like it's not happening. The business is definitely happening. So that big change has happened, which I never thought would happen. So that has been a big positive sign. So kal ko it is not mandatory that you have to travel and then only sell a product or talk about a product. There are people receptive who have adjusted to the change. So now I can say it is more profitable in this business because you're doing everything online. You're saving your travel time, you're saving your money on travel, everything, and you're doing it at your own pace and your comfort zone. So that is a very big change which has happened, and it's doing very well. It's a big comfort on that. It's a big comfort. Hema ji, the next question is your final tips on MDRT experience and budding leader to be successful. आप जैसा अगर बनना हो और आपके जो आपकी जो पथ है उस पर चलना हो, आपके रोड मैप पे चलना हो, तो क्या टिप्स देंगी आप हमारे लोगों को? In my I lived in a small building in Bombay where we were a family of people of the same community living. So in that building, I had one of my neighbors, I don't want to take names, who was a very bad looking girl. And बहुत अमीर बाप की बेटी थी. तो अगर जब हम उनको पूछते थे कि whom do you like the most, she was a big fan of Rishi Neetu की जोड़ी. So I said, you find Neetu Singh very beautiful? She said, no, I am most beautiful. Okay. So Taki, it shook the ground off my this. I said, how can she call herself beautiful? ऐसा कोई जगह चेहरे पे नहीं था जहाँ पिंपल्स नहीं था. काली थी, मोटी थी, चश्मा. मैं बोली इसमें अपने आप को सुंदर कहना. So she told me, my father said there can be somebody better than you, somebody worse than you, but there cannot be somebody like you. Thank you. One thing I learned from this, many years
after this conversation with her, we are still friends, is the confidence in herself, the faith in herself. You can look at it. You can always say this is arrogance कि कोई इतना बदसूरत हो कि अपने आप को खूबसूरत मान रहा है. No, it is the faith and confidence the father instilled in that child, which was a very, very, very big positive point. So people, partners outside, they don't become Hema Jairam, become what you are, because you are unique by yourself. That God is not mad to create you all. You all are unique. You all are extremely good, extremely beautiful in your own way. Have faith in yourself and don't stop dreaming. जिस दिन आप ख्वाब देखना छोड़ दोगे, it is you have stopped living. Because then हम क्या बोलेंगे, हाँ जी रहे हैं, बस सब जगह पे कोरोना है, जीना है करके जी रहे हैं, और क्या करें, मजबूरी है, जब तक कोरोना नहीं आएगा जान रहेगी, जब आएगा जान चली जाएगी. No, don't get into that mode. Never stop dreaming. Even in corona periods, you have to dream कि कोरोना के बाद आपकी सपना क्या है. Your dream should never stop. As I say, you have to celebrate yourself. Nobody is going to come and celebrate you. You have to celebrate yourself. You should feel proud about yourself. And this industry, one more big mantra is, when you bring somebody in, whether it's a partner or an advisor, take a commitment for them कि if they give undivided 100 days to this industry, then this industry is for them for life. Because in that 100 days, they will learn, they will understand. And when I say 100 days of understanding, it's not like I gave 15 minutes yesterday, I gave half day yesterday, I gave 2 hours yesterday. No, it is like your regular school. Insurance industry is like 2 types. अगर आप correspondence course पढ़ाई करोगे, आप regular college करोगे. आप correspondence करेंगे तो कोई कंपनी आपको बड़े पैमाने पे नौकरी नहीं देगी, because इसने कुछ खास किया नहीं है, घर में बैठ के पढ़ाई किया. But when you do a regular college attendance, it's a totally different thought process. It is like that. First 100 days, that person has to participate in everyday activity of the office, in understanding everything. Then the company becomes that. The insurance industry is theirs. Second thing I would like to tell to any MDRT aspirant out there is, please don't sit in the office and at home. The field is your place. You have to be. Until and unless you complete 2 presentations a day, don't get back home, don't get back to your office, or don't come out of your workroom if you're working from home without making 2 presentations a day. You cannot. If you have not made the 2 calls a day, you have wasted 1 day of your life. You can't blame anybody. It is not mandatory that everybody is going to give you a big ticket, so that 2 calls a day is mandatory. It's a mantra. Second thing is, there will be problems everywhere. घर में problem होगा, कंपनी में प्रॉब्लम होगा, ऑपरेशंस वाले के साथ नहीं जमता, ये सेल्स मैनेजर पागल है, ये गलत है, वो गलत है. लर्न टू co-live with your problems. This is your living family, that is your extended family. ऊपर वाले ने आपको सिर्फ 2 चीज में पाबंदी डाली है. You can't choose your mother and father. दुनिया की 2 सच्चाई. First is your mother, second is your father. Your relatives are something which is an extended family. लेकिन आप अपने दोस्त चुन सकते हो. आप कहाँ रहना, किन लोगों के साथ रहना चाहते हो, आप चुन सकते हो. So when you don't have the opportunity or the permission to choose your relatives and your family, you learn to live with them. You have to live with your extended family where you're working. You have to adjust. It is not to keep them happy. It is for your mental peace. It is for your mental peace, where you learn to co-live with your people, because you cannot be a cribbing partner or somebody who's finding faults in everything. किसी को आपका presence अच्छा नहीं लगेगा. So that is very important. Learn to co-live with your problem, and keep a destination, keep a celebration for everything. Some partner does something, you can get an opportunity, celebrate, make life, find out reasons to celebrate every achievement which is a destination. And don't keep big journeys. Small journeys बना के फिर उसको एक बड़ा destination बना दो. Do that. Please celebrate it that way. And if you have a big team, set initiative goals. हर मीटिंग पे एक गोल रखो. कहना कि बॉम्बे इज वेरी गुड इन द मेट्रो सिस्टम एंड रेलवे सिस्टम. बोलना अंधेरी से पार्ला जाओगे तो ये गिफ्ट है, पार्ला से अब बैंड्रा पहुंच के तो ये है. Create some excitement for everything. Please create that. And this is the job of the partner, because ये तुम्हारा परिवार है, कंपनी का नहीं है, ये तुम्हारा परिवार है. Create some fun, create some excitement. कि कोई भी छोटी चीज भी हासिल करो,
thap tapao, pat them on the back and say you have achieved something really great. Who doesn't want accolades, Taki? Everybody, every one of us want that pat on the back. 36 साल के बाद भी खाना बना के रखती हूँ तो आई आस्क माय हस्बैंड, आज कैसा था खाना? Sometimes he gives me that look, दोबारा वही पूछ रही है. But if I don't get an answer, I give back. इतना पकाती हूँ, कभी मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि अच्छा बना. We know it is good, but we still want that reassurance. अच्छा बना. That is very. We are basic emotional country with all emotional foods, so that emotion is very important. Please. Indeed, you know, जब भी पत्नी हेमा जी, जब भी पत्नी तैयार होती है, वो ये एक्सपेक्ट करती है कि पति, ये मेरी लर्निंग है कि हर बार वो जब तैयार होती है तो उसको ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि कॉम्प्लीमेंट पति की तरफ से आए, आना ही चाहिए, हमारा हक है, हमारा जन्म सिद्ध हक है. क्योंकि अगर पत्नी अगर मैंने विवाह किया है तो ये तो निश्चित है कि मुझे पसंद है, लेकिन ये हर रोज जताना जरूरी है कि मुझे पसंद है, राइट ना? अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है, चाहे वो खाना हो या उसका सजना संवरना हो या आपके पार्टनर की छोटी छोटी कामयाबी हो, हमेशा रीअश्योरेंस लोगों को बताएं. बहुत जरूरी है, बिकॉज पीपल लुक फॉर रीइंश्योरेंस. ओके, एंड पीपल हु फील इंश्योरेंस इंडिया में बिकेगा नहीं, इट इज वेरी टफ, सबके पास है. इंश्योरेंस इज इन योर लाइफ. व्हेन आई सेड आप जैसे सांस लेते हो, आई हैड अ ट्रेनर हु थॉट मी वंस कि मान लो कि आई एम मीटिंग somebody with 2 children, I am having 2 children. मेरा एक बेटी है, मेरे को शादी कराना है, मेरे को सामने से किसी के वहां से आई गॉट ऑफर कि अपना लड़का है जिसका शादी नहीं हुआ है, व्हाई डोंट वी टॉक. हम पहला क्या करते हैं, हम लड़के के घर देखना जाते हैं, एंड वी डोंट गो अलोन, वी टेक 3-4 elders of the family to see the boy's house. Going and seeing the boy's house is that insurance where we are trying to find out घर बार ठीक है कि नहीं है. That journey is the insurance of going and visiting the house. उसके बाद वो अपने घर आते हैं कि हमारे घर की बहू बनने के लिए लायक है कि नहीं, that is their insurance. उसके बाद शादी होती है, शादी होने के पहले engagement होती है. That ring which you exchange is the insurance that that family में शादी होने वाली है. बड़े लोगों के सामने बैठ के जो exchange होती है, that is the insurance. शादी हो जाती है, हिंदू में तो मंगलसूत्र पहनाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, अग्नि फेरा लेते हैं. चर्च में तो आई डू फादर के सामने बोलते हैं, मुस्लिम्स में निकाह कबूले बोलते हैं. एवरीवेयर दैट इज द इंश्योरेंस, दैट मंगलसूत्र इज द इंश्योरेंस. हिंदू एक्ट में दैट अग्नि इज द साक्षी, अग्नि साक्षी बोलते हैं हम लोग, दैट अग्नि इज द इंश्योरेंस. ठीक है, दिस इज योर रोजमर्रा. इसके लिए आपको कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए. शादी होती है, द वुमन गेट्स प्रेग्नेंट, द वूम्ब इज द इंश्योरेंस फॉर द चाइल्ड कि मेरी माँ मुझे सुरक्षित रखेगी. That womb is the insurance for that child. Delivery के टाइम पे अस्पताल जाती हो या डाइजी हो, you might not have, you are going to in a village, it's a midwife. That midwife is a insurance कि बच्चा सही सलामत जन्म लेगा. This is my guarantee to you. बच्चा आने के बाद क्रॉल करता है, आप उसके पीछे पीछे लगे हो, लेकिन जब वो चलने लगता है, the father comes and gives that one finger. That finger is the insurance कि anybody will drop me, but this finger of my father's will not let me down. That's why I'm telling you, this is an emotional subject. Just apply your day-to-day feelings into it. Business अपने आप चलेगी. You cannot say, इसके लिए आपने जब स्क्रिप्ट पूछा, मैं बोली इसमें कोई स्क्रिप्ट है ही नहीं, सिर्फ दिल का स्क्रिप्ट है. Well, very interesting हेमा जी, आपने आंखें खोली है और एक नया डायमेंशन पर्सपेक्टिव दिया है. तो अब हम बढ़ते हैं. मेरे फोन में ढेरों सवाल आ रहे हैं, जो समय की कंस्ट्रेंट की वजह से सारे सवाल मैं आपसे नहीं पूछ सकूंगा, बट चंद सवाल हमारे पार्टनर भाई बहन जो सुन रहे हैं, नॉर्थ में बैठकर, ईस्ट में बैठकर, वेस्ट में बैठकर और इंटायर साउथ इंडिया, उनके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो आप पर्सनलाइज आंसर दें तो उनको काफी मदद होगी. तो ये रहा मेरी ओर से पहला सवाल. जी, आप तैयार हैं हेमा जी? हाँ जी. ओके, तो हेमा जी, पहला सवाल है. आपने कहा वन ऑफ माय मोस्ट प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स टर्न डाउन द इन्वेस्टमेंट डिस्पाइट ऑफ पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑफ माई सेल्फ एंड हरीश. आपने बताया अपने प्रेजेंटेशन में, उसी से रिलेटेड ये सवाल है. द क्लाइंट वाज ट्यूटर्ड बाय अदर रिलेटिव्स ऑफ देम, आपने बताया. सो हाउ वुड यू रिकमेंड हैंडलिंग सच सिचुएशन? कैसे ऐसे सिचुएशंस को आप टैकल करेंगे?
if the client says no? जी, Right, that is your question, right? आपने काफी एफर्ट दिया, जो आपने एग्जांपल दिया था कि हरीश के साथ आपने एक कस्टमर पे बहुत काम किया, लेकिन उनके रिलेटिव्स के इन्फ्लुएंस में आकर he had denied the policy because of the influence of the relatives. So how do you tackle such situations? You please be in touch with that client. See, the biggest mistake we do is, Takiji, when the client is influenced by his relatives and he says no to us, we immediately shut down that client from our lives. Please don't do that, because every individual buys 7 to 9 policies in his lifetime. The first case might not come to you, but the second case onwards it will come to you. It is your PPF with that client. You can always go and update him on what is available in the market. You can please do that. Like how you do your health checkup once in a year, once in 6 months. Diabetes वाले को डॉक्टर कहते हैं हर 3 महीने या 6 महीने में ब्लड टेस्ट कराओ. That way, please be in touch with that prospect throughout, telling him this has come with us now, this is there with us now, this is the latest update. Don't talk as if you are selling, you are telling. Insurance cannot be sold. Insurance has to be told. It is not selling, it is telling. Just update them with that knowledge. Definitely you will see success. It cannot fail. आपका commitment देख के वो बंदा लेगा. Please don't allow that ego factor to play there and say उसके खानदान वाले ने ना बोला अभी हम नहीं देंगे उसको, लेंगे नहीं. वो पत्थर तोड़ते रहना, वो मारते रहना. वो वार में कौन से वार में वो पत्थर टूट जाएगा अपने को पता नहीं, लेकिन पत्थर टूटेगा. So again, आप attitude डेफिनेटली टूटेगा. अगेन आप एटीट्यूड की तरफ जा रही है. पीपीएफ खुलकर आ रहा है, और पीपीएफ अकाउंट अब खोलना ही पड़ेगा हमारे सारे पार्टनर्स को. आज ये फ्री अकाउंट है, ऑनलाइन अकाउंट अभी हिमाचल, राइट, विदाउट पैसा आप खोल सकते हो पीपीएफ अकाउंट. बहुत बढ़िया. तो आपने सिर्फ इमोशनल कंट्रीब्यूशन. Taki, before you move to the next question, request you to kindly do the stop sharing of the slide, please. आई थिंक ये अच्छा लग रहा है मिस्टर सुभाषिश, लोगों को पता चले कि सवाल जवाब चल रहा है. आई थिंक दैट्स द पर्पस. क्या हेमा जी, आप अग्री करती हैं हमारे साथ? नो प्रॉब्लम, व्हाटएवर सूट्स यू ऑल, प्लीज. तो नेक्स्ट थिंग इज, बहुत अच्छा सवाल आया है. हाउ डू यू अप्रोच द न्यू कस्टमर, हाउ टू बिलीव इन अननोन पर्सन फॉर एडवाइजर? यूजुअली पीपल बिलीव इन LIC, बट कोटक इज प्राइवेट, एंड दे ऑलवेज, हाउ टू अप्रोच देम? ये LIC के ऑब्जेक्शन को या नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट इंश्योरेंस के ऑब्जेक्शन को ओवरकम करके हम अनजान लोगों को कैसे रिक्रूट करें? हाउ डू यू रिक्रूट स्ट्रेंजर्स विद द चैलेंज ऑफ बीइंग अ प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस? ओके, हियर आई गो बैक टू द बेसिक्स. आप हिंदी में जवाब चाहते हो कि इंग्लिश में? वेयर इज दिस पर्सन आस्किंग फ्रॉम? अगर इंग्लिश में देंगे मिलाकर तो सुपर्ब होगा. ठीक है. पहली बात, LIC इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, LIC इज अ कॉर्पोरेशन. जब मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, दिस इज इट. LIC इज अ कॉर्पोरेशन. यू कैनॉट बी ब्लंट इन आस्किंग. पहले आप समझ लो कि अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप नौकरी करना चाहते हो, आप बीमार हो, तो आप कहाँ जाओगे? अपने बच्चों को आप गवर्नमेंट स्कूल भेजोगे या प्राइवेट स्कूल? अपने बीमारी पे हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे या प्राइवेट हॉस्पिटल? हम बैंक कहाँ बैंक कर रहे हैं? Are we going to bank with a syndicate bank or a Canara bank or HSBC or an ICICI? First, understand this is for the partner or advisor, whoever has raised this question, for you to understand the difference. Until and unless you believe that privatization has done a big difference, you cannot convince the other person. Taki will agree to it. When I talk about insurance, I go back to 1993. I start from 1993 when the first bill was proposed by the top industrialists or business houses in Bombay. When Malhotra committee got formed, which year the bill was passed. क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे, देखो सामने वाले को ये जानना बहुत जरूरी है कि ये बंदा और बंदी is coming with some knowledge. अगर आप वो नहीं जानोगे, आप सिर्फ एक बुक में बोलोगे कि मैं 5 सवाल पढ़ा हूं जिसका 20-20 मार्क आने का चांस है, इसमें 2 में मेरे को आ गया तो I will get my 40 marks and I will come out. No, you need to know the basics. If you can show him the confidence on how a private versus government works, because when I go to my clients, when they tell me LIC guarantee है, तुम्हारा guarantee नहीं है, तुम्हारा क्या guarantee है? Talk about the solvency margin, talk about the licensing with IRDA, talk about IRDA body governing it. ये सब आप नहीं बोलोगे तो आप कैसा समझाओगे उनको, कैसा confidence दे पाओगे? जब हम कोई, और इंडिया में प्लीज डोंट टेल मी कि हम अनजान लोगों को कैसा
चूज करेंगे। जब हमारे माँ बाप अनजान लोगों को पकड़ के शादी करवा के हमको भेज देते हैं, फिर हम अपने आप को उस ढांचे में ढांच लेते हैं, तो एक क्लाइंट और रिक्रूट कौन सी बड़ी चीज है, उसके साथ थोड़ी कोई रिश्ता है। इट्स प्योरली अ बिजनेस डील यू आर डूइंग विद देम, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट for every partner, for me, I always mention the power of this subject, the knowledge of this subject is very important. After this meeting, everybody go back, please find out how the insurance industry came into India. You don't have to do a thesis on it. By 5 minutes samajh lo, just for 5 minutes understand how the formation happened and how strong my government regulation is with regards to insurance. एक बार वो confidence उनमें आ जाएगा, then you can take it, because LIC is no more a hurdle. I don't know about small towns, but if you know this, even LIC is governed by IRDA. You don't have to worry. And not being very rude, scams have happened in all the government-owned banks, whether it is PNB, whether it is SBI, but none of the private banks, MNC banks, has had a scam till today. So privatization and non-privatization, I can go on and on and on. There is a lot to understand in that. So for that, don't go into all those details. अपना basic insurance का formation वो आप समझ लो. That will be a big help. Started from 1993. Whoever is your trainer there can help you, or you all can take my number from Taki or Subhashis and call me. I will be happy to share with you all. No problem. So I would like to just give some details. You want, a training person to help. So 1993, government realized, indeed 1991, government realized that to support a population of 100 crore was not enough by one company, LIC. So the RBI governor, Mr. R.N. Malhotra, was given a team of 13 people, which has this research to reform and to increase productivity and customer centricity in life insurance. So 1993 में R.N. Malhotra कमेटी का संगठन हुआ, और 1993 से 99 तक 1999 7 साल तक इस कमेटी ने निरीक्षण किया जीवन बीमा के इंडस्ट्री को, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को, एंड दे केम टू अ कंक्लूजन कि इसको प्राइवेटाइज किया जाए। 1999 से लेकर 2000 तक इस पर बहस हुई, और सन 2000 में ये बिल, जिसका नाम पहले IRA था, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसको IRDA के नाम से निकाला गया। इंडीड बहुत कम लोग जानते हैं कि IRDA एक्ट जब पास हुआ था तो 1956 LIC की जो एक्ट है उसको अमेंड किया गया था। द मोनोपोली ऑफ LIC वाज रिवोक्ड, और अमेंडमेंट के बाद ये एक्ट बना। इंडीड आज के डेट में जो हमारे साथ जुड़े हैं वो ना केवल IRDA एक्ट 2000 के साथ जुड़े हैं, the following acts are involved in every recruitment and every policy. First act, लाइफ इंश्योरेंस एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट है, सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1938 आता है। दूसरा, अमेंडमेंट्स ऑफ LIC एक्ट 1956 आता है। तीसरा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 आता है। चौथा, IRDA एक्ट आता है, और पांचवा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2006। तो आपकी हर एक पॉलिसी और हर एक व्यक्ति जो पॉलिसी बेच रहा है वो संविधान के 5 एक्ट्स के द्वारा निर्बद्ध है। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेफ्टी, दिस इज द सेफेस्ट वे, बट यू नीड टू रिमेंबर all these acts and you need to say, as हेमा जी ने कहा कि खुद प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। थैंक यू हेमा जी। सो आई गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 सवाल और लेंगे हेमा जी, समय की कंस्ट्रेंट की वजह से, बिकॉज हम और आप सारे दिन बात कर सकते हैं, बट आवर पार्टनर्स हैव एंगेजमेंट्स इन द डे, एंड सो एक बहुत इंटरेस्टिंग, हाउ डू यू डू HNI प्रोस्पेक्टिंग? HNI प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, ये सवाल आया है हमारे पास। First, decide from which sector you're going to do HNI prospecting. Today, Google gives you an idea, whether it's a businessman. Okay, let me go to somebody is living in a small place known as Vasant Nagar. Find out which are the top houses in Vasant Nagar. आप जहाँ रहते हो, find out who are the big people, whether it's a doctor, whether it's a lawyer, whether it's a chartered accountant. First, find out, do a bit of profiling for them. Do a bit of profiling about them. Then go and talk about our opportunity, and don't worry what is the outcome. वो बंदा ना भी बोले तो फर्क नहीं पड़ता है। एक ही HNI के भरोसे पे प्रोस्पेक्टिंग मत करो। मेरे पास हमेशा लिस्ट पड़ी रहती है। मेरी ख्वाहिश है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को भी मैं जाके प्रोस्पेक्ट करके बोलूं कि डू गुड फॉर इंडिया। योर ड्रीम शुड बी दैट बिग। किसी को भी आप जाके मिल सकते हो। Please keep that thing, and none of the HNIs will give you meeting at one go. To know a bit about them is very, very, very important. If you know, if for example, if I have a lawyer in my area who is very famous, I will try to find out वो high court वाला है, civil court वाला है, is a criminal lawyer or is he a corporate lawyer? Find out that thing. Find out उसके घर में कौन कौन है. HNI prospecting takes time because उनके profiling में, उनके research में अपना 15 दिन से 1 महीना लग जाती है.
पर एक बार आप करोगे and you break one ice, it becomes easier. But HNI recruitment is mandatory. It is mandatory. हो सकता है even meeting 5-6 people it cannot click, but the 7th one, 8th one will click. So this has to be an ongoing practice. It is like your trigonometry where the formulas are very difficult, but you have to keep practicing. Profiling of HNI you will fail because when he will tell you कि you know मैं कौन हूँ, मैं इतना बड़ा पोजीशन में बैठा हूं, तो आपको ये कहना बहुत जरूरी है कि यू आर अ सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस. आपके कहने पे फर्क होगा. इन HNI प्रोफाइलिंग और इन एन HNI इट इज आप खुदा हो. यू आर गॉड. दैट इज हाउ इट वर्क्स basically. And HNI guys, every detail is out in the Google or it is out in your mohalla or through your friends. It's not difficult. It is definitely not difficult. Until it is specific कि इस बंदे को मैं कैसे tackle करूं, then we can talk in a different way. Otherwise, HNI profiling is easily available. Okay, thank you, Hema ji. It's all about the confidence which you carry and which you exhibit in the market and the belief. Hema ji, there are a lot of questions on different subjects, but they all are related to failure. So since this will be the last question I will take from you, failure. They are related to. मेरी आवाज आ रही है आप तक हेमा जी? हाँ. जी, आखिरी सवाल है ये. मैं सवालों के जो लिस्ट आए थे हमारे पास, उस I was just going through that. So I would like to accumulate lot of question and आपसे एक आखिरी सवाल पूछूं कि ये तो हमें भी पता है, आपको भी पता है कि हर एक कस्टमर को बेचा नहीं जा सकता, हर एक HNI या हर एक प्रोस्पेक्टिव एडवाइजर को रिक्रूट नहीं किया जा सकता. हमारे बिजनेस में फेलियर एमिनेंट है. इस फेलियर को, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि वो फेलियर अगर एक आदमी से हो गया तो उसको ही कैसे रिक्रूट करें, तो ये जो थॉट प्रोसेस है उस पे आपकी क्या राय है कि फेलियर को कैसे लिया जाए, एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर को कैसे किया जाए एंड मूविंग ऑन कैसे किया जाए, इस पर थोड़ा रोशनी डालें. आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश फॉर आवर व्यूअर्स. हाउ डू यू एक्सेप्ट फेलियर्स and how do you move on with failures? Because in life insurance, you cannot have a 100% strike, whether it's recruitment or selling. So Hema ji, your last and final input on how to accept and move on with failures. A failure is part of life. In fact, failure plays a bigger role in your life than success in insurance. 80% will be no, only 20% will be yes. Basic wise, if I go back, I will say go back to the prospecting list, keep your prospect list more. But as to how to convert the failure into success, it is persistently following up with that guy. See, if you follow up with the same subject, only insurance, he is going to get agitated, he or she. Definitely going to get agitated. In the initial opening of the program, when I said my partner or my advisor should be knowledgeable, it is they should have different subjects to talk to that person. If you don't have that, you cannot keep the relationship alive. Please don't take any personal failure personally. Don't allow ego to play a role here, because he is saying no to the concept, he is saying no to the policy, he is not saying no to him or he is not saying no to Taki. He is not saying no to you. आप कोई चीज या आप कोई प्रपोजल उनके सामने रख रहे हो, वो उस प्रपोजल को ना बोल रहे हैं. उस साले ने मेरे को ना बोला नहीं, वो आपको ना नहीं बोल रहा है. He is saying no to that. So distance, there has to be a 3-layer distance. One is a client, one is a proposal, one is you. तो बीच में जो प्रपोजल है, उस प्रपोजल का हामी या नामी होने वाला है, आपका हामी या आपका नामी नहीं होने वाला है. Unfortunately, we have not been taught to take a no. We always put ourselves before the proposal. हम बोलते कि हमने proposal दिया, how can he say no? भाई, you are not government of India कि proposal दिया और ना हो गया. No, it is not that. Please treat it as 3 layers. One is you, one is the client or the recruited person, or one is the proposal. There is a yes or no to the proposal and not to you. ये proposal नहीं click हुआ, दूसरा proposal लेकर आओ, तीसरा proposal लेकर आओ. Again, keep that distance. कोई ना कोई proposal click होगा. But if you put yourself before the proposal, you are always going to get hurt emotionally. Please don't do that. Please don't do that. It will not work out. And then always understand, in insurance industry, we are creating history. We are creating a history. One example from my former company, erstwhile company, लंदन में एक बहुत बड़ी चर्च बन रही थी, सेंट जॉन्स चर्च और समथिंग. बहुत साल लगे वो बनने में. तो इन दोज डेज ट्रैवलर्स यूज्ड टू ट्रैवल बाय हॉर्स, घोड़े पे जाते थे बिकॉज गाड़ियां नहीं थी.
So one traveler went and he saw this building बन रहा है. उसने एक बंदे को पूछा क्या बन रहा है? बोला क्या पता, रोज हम लोग को बुलाते हैं यहाँ पर, ईंट पे ईंट लगाते हैं, बीच में सीमेंट डालते हैं और कुछ बना रहे हैं. 6 महीने के बाद आया, दूसरा बंदा वही कर रहा था. उसको पूछा what are you doing? He said no, we are constructing something because we have built a wall now. It's a monument, I think. We are building a wall, so something is happening. But when the same guy asked a third person, what are you doing? He said, I am going to be creating a part of history because we are building the biggest church here and I am part of that history which is being created, and I'm very proud to say I am a mason here. Your job is the same. It is how you look at your job. वही काम कर रहे थे तीनों बंदे, वही दीवारें बना रहे थे, ईंट पे ईंट लगा के, वही सीमेंट लगा के वो लोग दीवारें बना रहे थे. आप अपना एटीट्यूड प्लीज चेंज कीजिए, क्योंकि ये बिजनेस में सुकून बहुत है, एंड में सुकून बहुत है. The teething period, that initial period of accepting failure is tough, लेकिन उसके बाद सुकून है, definitely सुकून है. Please bear in that transition period. And no business, no success comes without pain, without struggle. Please understand that. That PPF को अपनाओ, then you see the fun of it. Wonderful, हेमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया. ये पिछला 1.5 घंटा कैसे कटा, we did not realize, and wonderful. आपसे बात करके आई एम श्योर एक रिजुविनेशन का एहसास हो रहा है. मैं तमाम पार्टनरों के बिहाफ में, मैनेजमेंट की बिहाफ में आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. दिल से कर रहा हूँ, दिल की बात है, जज्बात वाली. तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने थैंक यू सो मच. सारे जो पार्टनर फ्रेंड्स हैं, फैमिली हमारी एक्सटेंडेड है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसके लिए समय निकाला. Thanks a lot, Hema ji. Indeed, it was a pleasure to be interviewing you, and looking forward to meet you in the office on a regular basis. And have a great day. So thank you so much. Thanks a lot, Hema ji. Okay, just hold on, Hema ji. Biren will close the session. Biren, over to you. Okay. Yeah, am I audible? Yes, Biren. perfect, loud and clear. Okay. Ma'am, thank you very much for your time and the kind of life experiences which you have shared with us and the kind of journey which you have shared with us. Now, agency is like a prism. So there are various angles from which you can look at it, and it will show a different kind of a color. So today in this conversation, we really saw something different. हमें कुछ नया देखने को मिला, कोई दूसरा एंगल देखने को मिला इस एजेंसी बिजनेस के तरफ. And madam, what was most heartening was the confidence, the conviction, and the clarity with which you are inspiring people around you. So extremely happy to have you on this program, madam. And I'm sure you have inspired a lot of us. And मुझे उम्मीद है कि सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत सारी चीज़ों पे क्लैरिटी मिली है. And going forward, we'll continue to organize such programs for all of you. So thank you, madam, for being here. Thank you, Subhashish. Thank you, Taki, for taking this forward. And thank you, Hema ma'am, once more. And we close the... My pleasure, Birenji. Yeah. I would just like to share a small anecdote for the people out there. Sure, madam. How to touch lives. Again, this was taught to me by some of my seniors. A guy used to go to a famous beach resort. And he used to stand on the resort beach में से निकाल के कुछ वो पानी में फेंकता था. Every day he used to do this. So people thought काम धंधा नहीं है. He's a useless guy standing on the seashore and picking up something and throwing something back into the sea. So one guy went and asked him, आप कर क्या रहे हो? तो उन्होंने कहा जब हाई टाइड होती है दिन में, तो यहाँ पर स्टारफिश बहुत आके रेत में फंस जाती है और अगर वो रेत में रह गए तो मर जाएंगे. तो मैं उसको उठा के फेंक रहा हूँ पानी में ताकि वो जिंदा बचे. So that guy said, you are mad. क्योंकि दिन में तो 2 बार हाई टाइड आती है, हजारें स्टारफिश आती है रेत पे, कितने मरेंगे, कितनों को आप बचा पाओगे, क्यों ये काम कर रहे हो? तो उसने दोबारा एक उठाया और फेंका और उसने कहा कि अगर मैं एक जिंदगी में भी बदलाव लाऊं, मैं एक जिंदगी को भी छू लूं, तो मेरी जिंदगी बन गई है. सो ऑल माय पार्टनर्स आउट देयर, अगर आप एक जिंदगी को भी सुधार सकते हो, अपने आप को नंबर्स के साथ तुलना मत कीजिए. इवन इफ यू आर मेकिंग अ चेंज इन वन पर्सन्स लाइफ, यू हैव लिव्ड. And that is the biggest achievement of your life. And if I get that honor of even touching one life across India, I'll thank the entire Kotak platform for having given that opportunity that I could do something for somebody. That will be the biggest achievement of my life. Thank you, ma'am, for these final words of wisdom.
and I'm sure it was also very inspiring to know how we can make a difference to the community around us, and let's look beyond business when we are in this kind of an industry. Thank you, ma'am, for these words. My And pleasure. now we close the session. Thank you, everybody, for your time. Thank you. Thank you, sir. Okay.